इसी कोर्ट में वो अपने इसी केस की, जिस केस में दोषी करार दिया गया है अतीक अहमद को, इसी केस में अपनी जो पैरवी करके लौट रहे थे तब उनकी हत्या कर दी गई थी। Arvind getting us all the details as far as this matter is concerned. The big story is that gangster politician Atiq Ahmed has been pronounced guilty by the court. This in connection with the 2006 kidnapping of Umesh Pal, who was a witness in the BSP. आगे धीरे धीरे और ये जो जानकारी है वो आएगी, क्योंकि अगर आप देखिए तो ये फिलहाल कोर्ट परिसर का नजारा है आशुतोष। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और खुद जो कोर्ट रूम है उसके अंदर किसी को भी जाने की मनाही है। लेकिन जो अंदर से खबर आई है, जो आज तक हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, वो ये है कि उमेश पाल की किडनैपिंग फॉर रैंसम के मामले में अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। अब कुछ देर बाद अदालत जो है वो सजा सुनाएगी और सजा पर बहस भी होनी है आशुतोष। Gangster politician Atiq Ahmed is guilty in the 2006 Umesh Pal abduction case. This is the first ever conviction of history sheeter Atiq Ahmed, found guilty and now convicted by the court in Prayagraj. His brother and accused Khalid Azim, alias Ashraf, has also been brought to the court, and we're waiting to get in more details as far as the conviction of Ashraf is concerned or what the court has had to say. But Atiq Ahmed is guilty, is what the court has pronounced in the 2006 kidnapping matter of Umesh Pal, who was later, in fact, last month murdered, in which Atiq Ahmed is... क्या खबर आप लोगों को, क्या खबर मिली? अभी चल रहा है, कार्रवाई चल रही है। वहाँ पे चल रही है, अंदर से क्या जानकारी? फैसला सुरक्षित रख दिया जाएगा 1-2 घंटे बाद। अच्छा, ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी ये पुख्ता जानकारी नहीं है। फिलहाल पुख्ता जानकारी यही है, अतीक अहमद को उसके कारनामों की सजा मिली है, दोषी करार दे दिया गया है। सजा का ऐलान, क्या उसको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है या फिर उसको कितने साल की सजा सुनाई जाती है या फिर फांसी की मांग बार बार जो परिवार की ओर से किया जा रहा है। चूंकि उमेश पाल अब जिंदा नहीं है, इसी वजह से परिवार ये चाहता है कि अगर अतीक अहमद को फांसी नहीं हुई तो परिवार के बाकी लोगों के लिए भी खतरा बन जाएगा। अब उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ को और बाकी लोगों को सजा का ऐलान क्या होता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आशुतोष, जैसा कि लगातार आज तक सबसे पहले अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा है, अतीक अहमद दोषी करार दिया जा चुका है और पहली बार ऐसा है, 40 साल से ज्यादा उसके अपराधों का करियर है और 40 साल से ज्यादा अपराधों के इस करियर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस मामले में उसको दोषी करार दिया गया है। और दोषी करार दिए जाने के बाद यकीनन सजा का ऐलान होगा और पहली बार ऐसा होगा जब इसे प्रयागराज में, जहां पर वो कुख्यात रहा है, जहां पर लगातार अपने काले कारनामों के जरिए अपने गैंग को बढ़ाता वो रहा है, आज उसी जगह पर उसकी किस्मत का फैसला भी हो रहा है। यकीनन जिसने लोगों को डरा धमका कर यहाँ पर रखा हुआ था, जिसने कई अपहरण किए, जिसने लोगों को मारा, जिसने घरों को लूटा, आज उसके मामले में फैसले का दिन है। सजा का ऐलान कुछ ही देर में हो जाएगा। जैसे ही जानकारी मिलेगी अपने दर्शकों को सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। लेकिन आज तक ने सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाई है, आशुतोष ने सबसे पहले आप तक बताया है। Samar Srivastava getting us very latest. Atiq Ahmed found guilty in the 2006 kidnapping case. What more can you tell us about the other accused, Samarth? Well, exactly, Atiq, and what we're just getting now that Atiq Ahmed and along with Ashraf and 10 others is found guilty in the abduction case of Umesh Pal that happened after the murder of BSP MLA Raju Pal. That's a big breaking coming in on India Today TV that Atiq Ahmed has been found guilty, and just after that in the scene, the security again has been beat that the final judgment will come in a minute later. But what we are getting is that Atiq Ahmed has been found guilty along with 10 others. So that's a big thing coming in, because it was a long wait for the people of Prayagraj and Uttar Pradesh, especially who were hurt by Atiq Ahmed and gang. That's a big thing coming in, that Atiq Ahmed has been found guilty, and that's the one thing. Because he has got more than 100 cases against him. He is a history sheeter. But the major thing is, this is just a case of abduction of Umesh Pal. It has nothing to do with the killing of Umesh Pal and other two criminals. So that would be the case much dangerous than this abduction case, and you can expect that he found guilty in this abduction case. And if you go through the history, the incident of murder of Raju Pal took place in the year 2005 when he defeated in the
Atiq Ahmed and his gang killed, including Ashraf. Telling us all of those details, Atiq Ahmed stands convicted in the 2006 kidnapping case of Umesh Pal. Remember, this is the man who's facing over 100 criminal cases. The first time ever he's been convicted by a court in Prayagraj. Atiq Ahmed, along with 10 others, has been convicted, the court pronouncing them guilty. We'll try and get in more details of his brother, also the other co-accused, is what we are in fact learning. Also, questions of course remain as to when the quantum of punishment is going to be announced by the court here in question. Details emerging from Prayagraj of Atiq Ahmed being convicted in the 2006 kidnapping case of Umesh Pal. This is the abduction case. Strict security arrangements made. Cops deployed along the route as concerns raised by Atiq Ahmed also moving Supreme Court, saying that there is a risk to his life. Cops are inside the courtroom as well, is what we are learning. Over 300 police personnel, including the inspectors, have been deployed for security. Unprecedented security for the man who's now been convicted by the court. We'll try and get a word from my colleagues about the quantum of punishment. Listen in to what Chitra is now saying. मंत्री जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद। अच्छा ठीक है, देखिए इनकी ओर से जो जानकारी दी जा रही है यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर अभी जो दोषी करार दिया गया है मैक्सिमम उम्र कैद की सजा हो सकती है। परिवार के लोग चूंकि भावुक हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल है। उमेश पाल अब है नहीं, उनको हत्या की जा चुकी है उनकी, लेकिन चूंकि ये मामला अपहरण से जुड़ा हुआ है और अपहरण के मामले, जैसा कि यहाँ पर मौजूद वकीलों की ओर से जानकारी दी गई है, अपहरण के मामले में मैक्सिमम सजा जो है वो उम्र कैद की है, फांसी की सजा नहीं है। इस पूरे मामले में इंतजार करना होगा कि कितने देर में ये फैसला आता है। Chitra getting all the details, talking about the possible quantum of punishment, of course, but we'll wait to hear from the court. The maximum punishment is life imprisonment, is what Chitra is now saying in the case of kidnapping. Remember, this matter has got to do with the kidnapping case, the abduction case of Umesh Pal in the year 2006 and not the murder case of Umesh Pal. Umesh Pal was kidnapped, the court says, has in fact pronounced that verdict a few moments ago, by Atiq Ahmed. And there were other 10 accused also in this entire matter. Was murdered last month. Allegedly, Atiq Ahmed and his brother Ashraf are behind this conspiracy too. But this case has got to do with the events from the year 2006 when Umesh Pal was allegedly kidnapped. Now the court says that Atiq Ahmed is guilty. Pronouncing him guilty, the court has said that Atiq Ahmed was behind this. Facing over 100 cases, but the first ever conviction of Atiq Ahmed, man on your screens, is a history sheeter, but he also dabbled in politics. He was in fact associated with the Samajwadi Party as well. This is a crackdown of the Yogi Adityanath government of Uttar Pradesh against the mafia and against criminals in the state of UP. So much so that Atiq Ahmed in fact was in a jail in Gujarat, and over yesterday and the day before yesterday he was moved. कब्जे में सरकार की ओर से ले लिया गया है और जो जानकारी हमारे पास है, सालाना 1200 करोड़ का नुकसान अतीक अहमद और उसके गुर्गों को हो रहा है। जब से उनके खिलाफ एक्शन और ज्यादा तेज हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी कमर को तोड़ने के लिए सरकार किस तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन आज चूंकि सजा का दिन है, दोषी करार दिया जा चुका है। सजा क्या उम्र कैद होती है, मैक्सिमम जो सजा है इसमें वही मिलनी चाहिए। परिवार की ओर से, यहाँ के जो लोग हैं उनकी ओर से बार बार ये बातें कही जा रही है। एक बार फिर से जरा हम तस्वीरें दिखाएंगे, पीछे थोड़ा सी जगह दीजिए, पीछे की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। इसी कोर्ट के भीतर आपको बताते चले, MP-MLA ये कोर्ट है। MP-MLA कोर्ट में सिर्फ उन लोगों को सजा सुनाई जाती है जो कि MP रहते हुए या फिर MLA रहते हुए जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हों। और MP रहते हुए आप जरा सोचिए, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का MP था, 2004 में वो चुना गया था। 2005 में राजू पाल की हत्या वो करवाता है षड्यंत्र रचकर। चूंकि राजू पाल जीतते हैं BSP से, उसका भाई हार जाता है, तो बदला लेने के लिए राजू पाल की हत्या करा दी जाती है। राजू पाल के कांड में
एकमात्र गवाह जो उमेश पाल थे 2006 में उनका अपहरण कर लिया जाता है कि तुम गवाही नहीं दोगे और अगर तुम गवाही दोगे तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। लेकिन उमेश पाल का अपहरण का जो पूरा का पूरा मामला था, 1 साल के बाद वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं और चूंकि एमपी रहते हुए उसके ऊपर ये मामला दर्ज किया गया था, इसी वजह से MP-MLA कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। लेकिन यकीनन उत्तर प्रदेश के अगर इतिहास को हम देखें तो चारों तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, चूंकि जिस कल बुंदेलखंड से इसको लेकर आया जा रहा था, वहां पर ददुआ का एक समय में राज रहता था, पूर्वांचल में शिव प्रकाश त्रिपाठी, इन लोगों का राज रहा करता था एक वक्त पे। और आपको बताते चले अतीक अहमद का आतंक जो अब खत्म होने के कगार पर है। Atiq Ahmed has now been convicted by the court. We're waiting to hear from our reporters on when the quantum of punishment is going to be pronounced. Guilty in the 2006 abduction case of Umesh Pal was later, in fact, उनको MP-MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है। जो सूत्र बता रहे हैं कि आज ही सजा का ऐलान भी होगा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए, लगातार 2 दिन से सभी की निगाहें अतीक अहमद पर टिकी हुई थी और इस कोर्ट पर टिकी हुई थी, जहां इस वक्त आज तक की टीम मौजूद है कि MP-MLA कोर्ट प्रयागराज वो क्या अपना फैसला सुनाती है। और अब से कुछ देर पहले ही अदालत ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें अतीक अहमद, माफिया डॉन भाई अशरफ और फरहान समेत कुल जो 10 आरोपी थे उनको अदालत ने दोषी करार दिया है। आपको बताऊं, ये इसमें जो केस था, इसमें जो सेक्शन लगा हुआ था आशुतोष, 364A लगा हुआ था और 364A में उम्र कैद की सजा और अधिकतम डेथ सेंटेंस। अब ये देखना होगा कि जो अदालत है वो अपना क्या जो सजा है वो क्या किस तरह कितनी सुनाती है, इस पर सभी की निगाहें टेकी हुई हैं। लेकिन अदालत ने माना है कि अतीक अहमद जो उमेश पाल है उसकी किडनैपिंग फॉर रैंसम। Getting in all the details in the court in Prayagraj, where 10 accused, including Atiq Ahmed, have been convicted by the court. This is the first conviction for the history sheeter, who's faced. तो क्या आज ही सजा होती है या इस तरह का भी होता है कि पहले ही सजा होती है? सजा कुछ दिन बाद, अभी सजा का आज दोषित कर दिया जाएगा, सजा बाद में किया जाएगा। जी, रिजर्व रखते हैं और उसके बाद फिर ये होता है कि कितनी सजा देते हैं, ये कोर्ट के ऊपर। आप लोग लोकल है यहाँ के, ये बताइए कि अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है, क्या प्रयागराज की जनता का क्या रिएक्शन? आप क्या खुश हैं या किस फैसले को कैसे देखते हैं? वो तो अभी कोर्ट निर्णय देगा, क्या करना है क्या। आपका क्या रिएक्शन होगा? हम उसमें क्या कहें अभी, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये जो इस तरह की प्रतिक्रिया है आशुतोष, मैं आपको बताऊं कि अतीक अहमद के बारे में प्रयागराज और प्रयागराज के आसपास मालूम सबको है, पता पुलिस को भी है, शासन प्रशासन को भी है। लेकिन जब सत्ता जेब में होती थी अतीक अहमद के और खुद वो विधायक था, सांसद था, उसके गिरुगे चारों तरफ मौजूद रहते थे, तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए। और सत्ता तो अब नहीं है, उसके बावजूद भी उसने उमेश पाल की सरेआम इसी प्रयागराज में हत्या करवाई, गोली मारकर, बम मारकर। कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की कि सत्ता किसी की भी हो, राज हमारा ही चलेगा। और शायद यही वजह है कि अब जो उत्तर प्रदेश सरकार, उसने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है। और इन सबके बीच बड़ी खबर यही है कि 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, अपराध का शतक पार कर चुका है अतीक अहमद। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि 17 साल बाद एक केस में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। Arvind getting us all of those details from right outside the Prayagraj court, and these are big developments that we're reporting on. Finally, law catching up with Atiq Ahmed. The court, for the first time ever, this is the man, remember, facing over 100 cases, but this is the first conviction for Atiq Ahmed. Arvind, I believe, continues to be with us. If you could please have a confirmation on that. There are 10 other accused as well in this entire matter who've been convicted by the court. The quantum of punishment likely today is what we're learning from the court. Also, the maximum punishment for this is life imprisonment. This is a case in connection with the kidnapping of Umesh Pal and not the murder. In fact, the murder of Umesh Pal took place last month, in which Atiq is also being looked. Atiq's role is also, of course, being looked at. The court has pronounced that indeed Atiq Ahmed and his associates are behind the kidnapping of Umesh Pal. This is the abduction case of the year 2006. Atiq guilty in the 2006 Umesh Pal abduction case. We're waiting to hear on the quantum of punishment that is in all
likelihood going to be pronounced. In fact, today is what we are learning from our sources. Ten accused held guilty by the court in Prayagraj. Concerns raised by Atiq Ahmed about his security, about the fear of being bumped off, is what was being said. And that's the reason why the man in question here also moved Supreme Court just today, where the matter was heard by the Supreme Court that said that this is going to be heard in a lower court. Top developments from Prayagraj court there. For the first time ever, Atiq Ahmed has been found guilty in the 2006 abduction case of Umesh Pal, the prime witness in the murder of BSP MLA Raju Pal. The quantum of punishment also, what we're hearing, is possibly going to be pronounced today by the Prayagraj court. Atiq Ahmed, in fact, found guilty in the 2006 abduction case of Umesh Pal along with 10 others. Right now, in fact, he continues to be in court. Inside the courtroom, these are the first visuals of Atiq Ahmed as the chorus grows for the strictest punishment against this man who's a known history sheeter. These are visuals coming in, and this is an India Today exclusive. Coming in from inside the Prayagraj court, which has just pronounced Atiq Ahmed and others guilty in the kidnapping case of Umesh Pal. You can see those images from inside the court premises. First visuals here live on India Today. A battery of reporters reporting on all the developments. As you can see in those pictures, Atiq Ahmed there being taken away by cops. Those images of the Dawn-turned-politician, who in fact now stands convicted in this case. We expect that the sentence, the quantum of sentence, will also be pronounced by the court today itself. Those images, first images on India Today, live at the moment from inside the Prayagraj court, from where Atiq Ahmed is being brought out at the moment by all the cops who are present over there, UP police there.
first images of Don Atiq in court. This after the verdict was pronounced by the MP-MLA court in Prayagraj, in fact holding him guilty for the kidnapping of Umesh Pal, a 17-year-old case that comes to haunt Atiq Ahmed back. Samarth is over the phone line with me right now from Prayagraj. Samarth, give us more details about what happened inside court. Okay, we'll try and reconnect with Samarth, my colleague, who's reporting from inside the court premises in Prayagraj. Obviously, there's a lot of chaos and commotion over there, but those first images of Don Atiq inside the court premises, you can see he's being taken away by UP cops at the moment. Also, what we're likely to hear from the court is the quantum of sentence for those who have been held accused in this case, including Atiq Ahmed. Atiq Ahmed over there produced earlier before the Prayagraj court amid tight security. Remember, earlier he went to the Supreme Court today and said that there is a threat to his life, that he needed to be protected. Certain charges that he made against what he feared as far as his own life is concerned, but the Supreme Court said that he needs to approach the High Court in this regard and disposed of his plea. Atiq Ahmed there in the premises of the Prayagraj court earlier today. It was a closed court hearing where the verdict was pronounced. He has been held guilty in a 2006 abduction case, that of Umesh Pal, who was murdered in broad daylight in February this year. In fact, hang the killers slogans were heard inside the court premises as well. This is what those who were inside the premises at the time that the verdict was pronounced have told India Today. We'll try and connect with our colleagues who are bringing us all the latest developments. They've been tracking all the developments. फाइनल स्तर पर सुनाएंगे कि क्या सजा हो सकती है, क्योंकि ये आप लोग कह रहे हैं 101 मुकदमे थे, बहुत बड़ा माफिया था। इस तरह के माफियाओं की कमर बहुत पहले अन्य सरकारें भी तोड़ रही थी, नहीं तोड़ पाई। तमाम पश्चिम बिहार बना दिए गए। एक बात बताइए आप, 364A भी इसमें है, कई अलग अलग धाराएं और अलग अलग धारा में अलग अलग सजा का प्रावधान है। 364A में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो उम्र कैद है और मृत्युदंड है, आजीवन कारावास और मृत्युदंड है। हाँ, तो उससे कम तो होगी नहीं। ये तो कोई कैस लगा लीजिए कि क्या होगी। 34 और 120 भी लगा हुआ है, कॉमन इंटेंशन और षड्यंत्र। खूब आप समझ लें, हम कहीं रहे, विदेश में रहे हो, जेल में रहे हो, कॉमन इंटेंशन 34 और 120 भी षड्यंत्र। इसके तहत सब मुलजिम को बराबर सजा होगी। यानी देखिए नेहा, अगर जिस तरह से अतीक अमूमन अपने गुर्गों के जरिए वारदातों को अंजाम दिलवाता था या कई बार जेल में, लेकिन जैसा कि वकील बता रहे हैं कि 34 लगा है और 120 भी कॉमन इंटेंशन, तो अलग अलग इसमें धाराएं लगी हुई हैं। 147, 148, 364 अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजा होगी। क्या सजा? देखिए, जहां तक पता लगा है कि 10 में से 3 आरोपी निर्दोष साबित किए गए हैं, कर दिए गए, और बाकी सबको सजा दोषी 7 को दोषी कहा गया। अभी अंदर से नहीं हो जाएगी। तो अब इसी तरह आप समझ लें कि किनको क्या सजा होगी, कौन किस पे क्या रोल रहा है। का ऐलान आज ही हो सकता है, आज ही होगा और आज ही 4 बजे तक आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो देखिए ये आपको बताऊं, ये जो कानूनी प्रक्रिया है, दोषी करार दिए जा चुके हैं। अब अदालत सजा का ऐलान करेगी, फिर उस सजा पर बहस भी होगी। जो आरोपी पक्ष के वकील हैं वो उस सजा पर बहस करेंगे और उसके अलावा जो पक्ष के हैं वो वकील करेंगे। उमेश पाल के वकील होंगे, उसके अलावा अतीक अहमद के वकील है, उस पर बहस करेंगे। लेकिन Okay, so that is what the lawyer who was in fact inside the court is telling us. He's saying that 7 of the 10 accused were held guilty and 3 others have been acquitted in this case, and the quantum of sentence is likely to be in fact pronounced today itself. He expects that by 4 p.m. that sentence in fact will be out, and there will be of course arguments before that on the quantum of sentence from both sides. Lawyers, Umesh Pal is now joining me in fact from Prayagraj, from outside the court premises. Umesh, if you can tell us what happened inside court today. No, we have some advocates here who were there who were present at that time when Atiq Ahmed was brought to the court. हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या अंदर आप लोगों ने क्या देखा? आप गए थे, काफी भीड़ थी, आप बता रहे हैं कि जा ही नहीं पा रहे थे। करीब 500-700 वकीलों की भीड़ भी है और 700 हाँ लगभग गली में पूरे भरे हैं। उसके अलावा अब इस तरह का माहौल है कि 1 घंटे के अंदर आ जाएगा।
जहाँ तक है। ऐसा माहौल कोर्ट में देखा, वकीलों की इतनी भीड़ कभी आप लोगों ने देखी? किसी मैटर में नहीं, क्योंकि वकील का मर्डर हुआ है इसलिए ऐसा है, नहीं ऐसा कोई और चर्चित नहीं रहता। अंदर नारे भी लगे थे, नारे लग रहे हैं इसलिए कि फांसी की सजा हो, लेकिन जो न्यायपालिका कहेगी उसी के अनुसार होगा। अच्छा। तो अच्छा, आप लोगों ने अतीक को भी देखा होगा अंदर, क्या लगा उसके चेहरे को देख के, उसके बॉडी लैंग्वेज को देख के? नहीं, वैसे कोई डर नहीं थी इस समय, नहीं है उसके चेहरे पे, और एकदम वो नॉर्मल है, और उसको लग रहा है कि मैं फिर वही हो जाऊंगा, मैं छूट जाऊंगा। आज तक लगा। तो आप लोगों ने क्या फिर चेहरे पे कोई डर, कोई शिकन, क्योंकि गुजरात से निकला तो अतीक कह रहा था कि कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, कोर्ट के कंधे पे बंदूक रख के मेरे ऊपर चला दी जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ लगा आप लोग? नहीं सर, अशरफ तो वहाँ डरा हुआ दिख रहा है, बाकी अतीक का तो पहले से ही उसी तरह है, वो तो आपराधिक रिकॉर्ड उसका वैसे भी रहा है। और अब इस सज़ा से जो है न्यायपालिका का भी और जो हमारे अधिवक्ता भाई का सेक्शन इस पे लगा है, इस पे अधिकतम सजा क्या, कठोरतम दंड क्या है? जी, आजीवन कारावास। इस पे आजीवन कारावास, मृत्युदंड का जी मृत्युदंड भी है, इस पे मृत्युदंड भी है इसमें दोनों, लेकिन आजीवन कारावास तो कंफर्म है कि होगा ही होगा। अच्छा जी, सजा ये पहली सजा सुनाई जा रही है, अभी तो उनके ऊपर 101 FIR दर्ज है, सब में सजा होगी, सब में सजा होगी, जैसे जैसे एविडेंस आते जाएंगे वैसे वैसे सजा होती जाएगी। ये तो पहली सजा है, पहली सजा के लिए इतना हाइप क्रिएट हुआ है, बाकी इनको डर किसी चीज़ का नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा तो चेहरे पे कुछ कोई डर नहीं इनके ऊपर, बिल्कुल ये लोग यूज्ड हैं, ये लोग कानून का माहौल उड़ाने वाले क्रिमिनल्स हैं, इनको कोई डर नहीं है, कोई जब तक प्रशासन खुद कार्रवाई नहीं करेगा इनके ऊपर कोई डर इनको नहीं होगा। अंदर है कुछ जगह है, पैर रखने की भी जगह बची, आप लोग क्या करेंगे? कोई जगह नहीं है, एकदम खचाखच भरा है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर जाएंगे अधिवक्ता उनको खुद ही पीटेंगे पहले तो, अशरफ को। अतीक भी डरे हैं, इसीलिए प्रशासन अभी उनको रोका है, और अभी जो है अभी आएंगे, उनको 4 बजे तक आएंगे, उसके पहले नहीं आएंगे। कब तक अंदाजा है आपको सजा के ऐलान का? जी ऐसा है कि लंच के बाद हो सकता है कि सजा का ऐलान करें। जी, लंच के बाद ही होगा। लंच के बाद होगी जी, लंच के बाद उम्र कैद कंफर्म होनी सजा होगी, इनको बिल्कुल होगी और होनी चाहिए। पब्लिक भी चाह रही है कि इनको सजा हो। अच्छा, अगर सजा आज नहीं होती है, अगर मसलन आज नहीं होती है, कोई अगली तारीख दे दी जाएगी, तो फिर क्या यही नैनी जेल में इन्हें रखा जाएगा या वापस गुजरात साबरमती? प्रशासन का विषय है सर, प्रशासन का विषय है ये, तो इस बारे में प्रशासन ही सोचेगा कि कहाँ इनको रखा जाए। हम लोग कैसे क्या बता दें, हम लोग तो चाहेंगे कि यहाँ ना रखा जाए, क्योंकि फिर इनका साम्राज्य यहाँ से चालू। आज डिसाइड होगा, सजा तो होगी ही आज। So, as you can hear that most of the advocates are advocating lifetime imprisonment and harsh punishment for Atiq Ahmed, but most of them are saying that there is no sign of fear on Atiq Ahmed's face. They haven't seen Atiq Ahmed in fear right from the beginning when he was brought here to the court. But did not show any signs of fear, as in fact he was brought inside the court premises. They do believe though that they saw Ashraf looking fearful about the fate that he is likely to meet with. Also, Ravish, if you can get clarity on the number of accused who in fact were held guilty, those who've been acquitted in the case, and their names probably from the lawyers. डेफिनेटली श्योर। आप लोग ये बताइए ना कि आप लोग तो अंदर थे, तो कितने आरोपी बनाए गए, कितने आरोपियों का दोषी ठहराया गया है, कुछ पता चला आप लोगों को? नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला है। अभी ये कुछ पता चल पाया कि कितने आरोपी हैं जिनका दोष साबित कर दिया है? आप लोग अंदर थे तो ये बताइए ना, कितनों का दोष साबित किया, कितनों का दोषी ठहराया अभी अंदर? सभी मुलजिमों को दोषी ठहराया गया है। क्या क्या संख्या होगी उनकी? 3, 4, 5 कितने? 10 की संख्या में है लगभग। 10 सभी को दोषी ठहरा दिया। हाँ, जैसा भी सूचना मिल रही है। अभी कह रहे हैं कि 3 को दोषी ठहराया गया, 7 के खिलाफ दोष नहीं साबित हुआ है, शायद ऐसा भी यहाँ कह रहे थे। कोई कुछ अंदर से इसलिए तो नहीं कह रहे, आप लोग जान नहीं पा रहे, इसलिए शायद अंदर की सूचना हम लोग है जो वही बोल रहे हैं, जो अंदर सूचना है। अभी फैसला सुरक्षित है, 3 बजे तक फैसला आ जाएगा। आप बताएं सर, 3 बजे तक इतना वो मतलब अलग अलग बयान आ रहे हैं, क्या आप लोग अंदर जा नहीं पाए थे या फिर भीड़ बहुत ज्यादा थी? क्या अंदर रोका जा रहा है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, उनके सुरक्षा में उस कोर्ट में नहीं जाने दिया जा रहा है। कोर्ट के अंदर सिर्फ वही जा सकते हैं जो इसमें एडवोकेट्स हैं, उनके एक जूनियर, बस उसके अलावा किसी भी एडवोकेट्स के अंदर एंट्री नहीं है। इतनी सख्ती आप लोगों के लिए पहले कभी हुई यहाँ पे? नहीं, इसके पहले कभी नहीं हुई, आज पहली बार ऐसा हो रहा है, इसीलिए शायद अभी पता नहीं चल पा रहा है। जी, अब जो भी अंदर होंगे उन्हीं लोगों को चीज़ें पता होंगी, अभी बाहर अभी कोई बात नहीं आ पा रही है।
इसके पहले नंदी जी का फैसला है, नंदी जी का है तो उसमें भी भीड़ कोई नहीं थी। उसके बिजमा यादव जी का उनके में भीड़ नहीं थी, किसी भी कोर्ट सब जाते आते थे, लेकिन इस वाले मैटर में ज़्यादा भीड़ है। No, because of there was heavy crowd of advocates and security personals in the court. So most of the advocates which are standing here right now, they are not sure about how many people have been announced accused in this case as of now. Amount of confusion over that. In fact, our reporter Kumar Abhishek is in fact reporting, as one of the lawyers, Ravish over there was telling you, is that it's a possibility that 7 have been cleared of the charges and 3 have been held guilty in this case. That includes Atiq Ahmed as well. If you can possibly get some clarity, was there any sort of clarity in terms of the sections under which the accused have been held guilty, whatever the number is, 3 or 4 or more, under the sections which they've been held accused guilty for? Sure, let them ask about the sections of this case. अगर आपको कुछ आइडिया हो कि कितने sections जो हैं उनके तहत आज ये दोषी ठहराए गए, सेक्शंस का अभी अंदाजा मुझे नहीं है, क्योंकि अब जो एडवोकेट्स होंगे उनके पास फाइल होगी वही सेक्शन जाएंगे। सेक्शन के तहत आज ये पूरा फैसला आना था। 120 भी है, धारा 34 है, 364 है, हाँ 364 है, 120 भी है, 364 है जिसमें उम्र कैद की बात है। जी हाँ, उम्र कैद है उसमें। अच्छा, अभी जो दोषी ठहरा है इस पर कुछ सेक्शन अभी तक लगाए हैं, अभी कुछ इसका अंदाजा है? जानकारी अभी नहीं है, ये भी नहीं पता, अभी जानकारी नहीं है। जानकारी मिले तब 3 बजे तक हो सकता है। 3 लोग ही दोषी ठहराए गए हैं। 3? हाँ जी, कोई 7 कह रहा है, 10 कह रहा है। नहीं 3 तो है ही हैं, अतीक अहमद है, अशरफ है और क्या नाम है, बाकी जो है अशरफ समेत 7 लोग जो है बरी हो गए हैं। हाँ, ऐसा सेक्शंस का कुछ अंदाजा है आपको, क्या सेक्शंस लगे हैं अभी? ऐसा है, आईपीसी के कई सेक्शन है, इसमें मुख्यतः देखा जाए तो अपहरण का 364 वो लगा है और उसी पे ही जो अधिकतम सजा का प्रावधान है उसी में है। तो अधिकतम सजा देखिए, हम लोग की अधिवक्ताओं की तरफ से मांग तो यही है कि हमारा अधिवक्ता मित्र हमने खोया है, तो हम तो यही चाहेंगे उनको कम से कम उम्र कैद या फांसी की सजा हो। अब देखना ये है कि ऑर्डर के लिए फाइल रिजर्व करने के बाद क्या ऑर्डर हो। उमेश पाल, और भी कई मामलों में गवाह थे, और भी कई इनके मामले थे जिसमें गवाह थे। गवाह के रूप में मुख्य रूप में इसमें देखा जाए अपहरण के मामले में खुद का उमेश पाल के मामले में और राजू पाल के मामले में भी उमेश पाल गवाह के रूप में है। तो क्या कोर्ट इस पर विचार करेगा? आप लोग क्योंकि ज़्यादा जानकार हैं कानून के, तो क्या कोर्ट इस पर भी विचार करेगा कि एक गवाह जो कि बहुत ज़रूरी गवाह हो सकता था कई और दूसरे मामलों में भी, अगर उसे ही रास्ते से हटा दिया तो ये एक काफ़ी गंभीर श्रेणी में आ जाए और सिर्फ उम्र कैद नहीं हो सकता, इससे भी ज़्यादा कठोर दंड मिले, क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये जान लीजिए, क्योंकि एक गवाह को अगर अपराधी द्वारा षड्यंत्र करके उसको मार दिया जा रहा है, यानी न्याय प्रक्रिया में बाधा डाली जा रही है। आप इसको समझ रहे हैं कि ये कितना गंभीर मामला बनता है कि एक गवाह को ही मार देना, यानी पूरे न्यायिक प्रक्रिया का आप गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए न्यायालय इसको जरूर जो है विचार में लेगी और उनको कड़ी से कड़ी सजा इस पर मिलेगी। अंदाजा कब तक है आपको, सजा कब तक ऐलान होगा? देखिए, अभी फाइल रिजर्व रखेंगे ऑर्डर के लिए। जहाँ तक उम्मीद ये है कि इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है ना, आफ्टर लंच कंफर्म हो जाएगा, ये इवनिंग तक मान के चलिए आप, ठीक है ना। लेकिन आज ही होगा सजा का ऐलान? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज ही होगी सजा, आज ही होगा, लगभग 3 बजे तक। 3 बजे तक सुना जाए, नहीं सुना जाएगा, सजा के बिंदु पर अवसर दिया जाएगा कि सजा कितनी हो और सजा के बिंदु पर अवसर मिलेगा। सजा के बिंदु पर ही होगी, नहीं होल्ड करेंगे कि वेदर आज सजा के लिए, आज सजा के लिए डेट रखी गई है। As you can see, the advocates have no idea about in which sections the judgment has been announced so far as about the conviction, but the most of the advocates who are standing here are advocating a lifetime imprisonment for Atiq Ahmed and other accused in this case.
There is some amount of confusion around the details of the judgment which has just been pronounced, Ravish, in the Prayagraj court. How many have been held guilty? How many have been acquitted? In this case, is Ashraf also guilty of the kidnapping charges that were leveled against him along with the 9 other accused, which included his brother Atiq Ahmed? There seems to be a little bit of confusion about that, and sections of the IPC under which they've been held guilty, if it is 364A, as has been said by one of the lawyers who was speaking to Ravish at the moment, then the maximum sentence in that is the death penalty as well. But the lawyers seem to think that there is a likelihood of life imprisonment that could be pronounced in this case. The sentencing, in fact, will be done today itself. Samarth Srivastav is joining me over the phone line. Samarth, we also hear that slogans of hang, killer, Atiq were also raised inside the courtroom. Well, exactly what India Today TV has access to video is telling the court and advocates how clear Okay, we seem to have lost that line with Samarth. We'll try and reconnect with Samarth. Ravish, आप भी हमारे साथ हैं इस वक्त. क्या आप उन लॉयर्स से बात कर ये पता कर सकते हैं कि कोर्ट रूम के अंदर शायद स्लोगन्स रेज किए गए कि हैंग, किलर, अतीक, फांसी की सजा दो, फांसी दो, इस तरह के स्लोगन्स रेज किए गए? Let's listen into one of the reactions that's coming in from a lawyer. कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है एंड अप्रोक्सीमेटली 3 का कंफर्मेशन इस जो अक्यूज हैं उसमें अशरफ, अतीक एंड फरहान. द कन्विक्शन इज बीन कंफर्म्ड. कन्विक्शन फॉर किडनैपिंग एंड अबडक्शन एंड क्रिमिनल कंस्पिरेसी ये है. बाकी 10-15 मिनट और लगेगा इसका पता लगने में. That is what the lawyer is saying at the moment. He's saying that 3 have been held guilty in this case. That includes Atiq Ahmed, Ashraf, his brother, and Farhan, also his relative. 7 others have been acquitted in this case. But remember that we are waiting for the order copy as far as the Prayagraj court is concerned, because there seems to be a little bit of confusion and lack of clarity because it was absolute chaos inside and outside the courtroom premises. Several lawyers had in fact arrived at the Prayagraj court, obviously in solidarity with Umesh Pal. Umesh Pal, who was murdered brutally in broad daylight. He was a lawyer as well. He was murdered in February, and this was a kidnapping case of his from 2006, and lawyers had arrived at the Prayagraj court in solidarity with him, and because of that there were so many of them. There's absolute confusion over what was it that was announced by the court. But we do know that Atiq Ahmed has been held guilty. He has been convicted in this case, and also the lawyers are confirming unanimously that there will be a sentencing today itself, that they're expecting that sentencing, that quantum of sentence for those held guilty in this case to be announced post-lunch by about 3-4 p.m. They expect to hear on the sentence. And also, if you can hear some of those slogans, Pasi do slogans were raised in court. Pasi do. These were slogans that were raised inside the Prayagraj court premises as soon as the court held Atiq
and others guilty of the 2006 abduction case. As per a lawyer who earlier spoke with the media, Atiq Ahmed, Ashraf and Farhan have been held guilty, but again we're awaiting clarity on that. We're awaiting to get our hands on the order copy in order to get the details of that. Ravish, my colleague, is reporting from outside the court premises. He is in fact joined by some of the lawyers who were inside the court. Ravish, जिस तरह से हम बता रहे हैं, विजुअल्स में सुनाई दे रहे हैं, स्लोगन्स रेज किए गए, हत्यारों को फांसी दो. The courtroom was replete with slogans of hang Atiq's killers, hang killers in that case. जी बिल्कुल, क्योंकि उमेश पाल आपको बता दें खुद एक वकील थे और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जितने वकील मौजूद हैं वो सब उन्हें अपने ही बीच का वो मान करके यहाँ पे पहुँचे भी हैं और इसलिए इनके मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है कि जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से बड़ी बेरहमी से उमेश पाल की हत्या की गई थी, जिसका वीडियो भी आया, ना केवल गोलियां चलाई गई बल्कि बम फेंके गए और घटना दिन दहाड़े उनके घर के ठीक बाहर हुई है और एक ऐसी घटना जिसमें ना केवल उमेश पाल बल्कि उनको सुरक्षा देने वाले जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी भी मौत हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जो वकील है वो इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और इसीलिए कोर्ट रूम के भीतर जब अतीक को लेकर के जाया जा रहा था तो वहाँ पर उसे फांसी देने के नारे भी जमकर लगाए गए। और आपको बता दें कि कोर्ट रूम के भीतर आज इस कदर हालात यहाँ पर बने हुए, जो वकील अंदर गए थे वो बता रहे थे कि जो केस से जुड़े हुए वकील हैं सिर्फ उन्हीं आज कोर्ट रूम के भीतर जाने की इजाज़त है। आमतौर पर जो वकील होते हैं, जब कोई बड़ा मामला होता है, कोई वीआईपी केस होता है, तो कई सारे वकील जो है वो भी अंदर जाते हैं और उनसे बात करते हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अंदर, आप लोग अंदर कोर्ट रूम में भी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन नारे ज़रूर लगे आज फांसी देने के। क्यों इसके पीछे? क्योंकि कोर्ट तो अपना फैसला हो तो जज साहब सुनाएंगे, लेकिन आप लोग वकील होकर के फिर नारे लग रहे हैं फांसी देने के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, सब लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और जो कोर्ट का फैसला आएगा वही सबको सम्मान होगा। थैंक यू। आज काफ़ी विरोध हुआ, अंदर का नारे भी लगे, काफ़ी नारेबाजी, फांसी देने की बात की। जी, अब वकीलों में अगर रोष है तो क्या वकील अपना जो है गुस्सा जाहिर नहीं करेगा? जिस प्रकार जब अतीक अहमद को लाया गया कोर्ट रूम के अंदर तो वहाँ का सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ता जनपद न्यायालय के थे, उन्होंने एक अधिवक्ता साथी खोया है। तो हम अधिवक्ता साथी हैं, हम सारे अधिवक्ता साथी एक हैं। अपराधी चाहे जो भी हो उनको सज़ा होनी चाहिए। जिस प्रकार अभी जजमेंट आया है, सुनने में आ रहा है कि 3 लोगों को सज़ा हुई है, बाकी जो है दोष मुक्त हुए हैं। अब देखते हैं क्या किस सेक्शन में कितना सज़ा जो है किसके ऊपर लागू होती है। क्या अतीक अहमद के ऊपर 364A में जो है सज़ा होगी कि नहीं होगी, ये देखना ज़रूरी है। 120 भी तो लगा हुआ है, तो ये तो जाहिर है कि अतीक अहमद 120 भी के मुलजिम बनेंगे। अब बाकी 364A पे देखना है किसको कितनी सज़ा। 120 में क्या प्रावधान है सज़ा का? आपराधिक षड्यंत्र है इसमें जो है, और 364 यदि लगता है तो उसमें आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है। और सब तो मृत्युदंड ही मांग रहे हैं। हमारे मांगने से क्या होता है, तो माननीय न्यायालय जो निर्णय देगी मैक्सिमम अपना वही माना जाएगा। हम लोग माननीय न्यायालय के जो आदेश करेंगे उसको मानेंगे। आप लोग अंदर गए थे तो क्या आप लोगों को तस्वीर क्या दिखी अंदर? अतीक दिखा आप लोगों को? नहीं सर, अतीक तो नहीं दिखा हम लोगों को। जो है अतीक दिखे जो है, अतीक जो है उस समय वास्तव में उनके ऊपर काफ़ी जैसे बर्डन हो, बड़े गंभीर अवस्था में थे कोर्ट के अंदर जाते वक्त। अतीक को शायद जहाँ तक ये सूचना हो कि उनको दोषी साबित किया जाएगा, लेकिन अशरफ का बच जाना जो है ये हम लोगों को थोड़ा अनभिज्ञ लग रहा है। हाँ, अशरफ को कन्विक्ट नहीं किया है? नहीं, अभी नहीं किए हैं। वो अब जो हो कर दिए, जो करना। 3 लोगों को किया गया, अतीक अहमद है और दिनेश है, एक और कोई है, 3 लोगों को किया गया है जी। और फिर ये अशरफ वाला मैटर भी नहीं। क्या अभी क्या लग रहा है आप लोगों को, कब तक और कितना समय लगेगा जजमेंट? आधे घंटे में जजमेंट आने वाले हैं। बस यही जजमेंट आएगा कि किस धारा में किसको कितनी सजा होनी है, बाकी उसके बाद फाइनल। अब हो सकता है एक चीज़ जहां तक जानकारी मिल रही है कि धूमनगंज पुलिस भी आज 120B में इनको रिमांड लेने का प्रयास करेगी। अगर रिमांड मिल जाएगा तो आपको बताते तो फिर 14 दिन की रिमांड अगर न्यायपालिका ने दे दिया इनको जो है मजिस्ट्रेट सीजीएम साहब ने, तो 14 दिन हो सकता है यहीं रहे, ना साबरमती और ना बरेली जाइए दोनों लोग जी। आज ही होगा अगर जी। अगर हाँ धूमनगंज पुलिस रिमांड ले लिया और रिमांड स्वीकार कर लिया गया माननीय न्यायाधीश ने, रिमांड पुलिस ने मांगा है सीजीएम के यहाँ से, यदि ये अलाउ हो जाता है तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में यहाँ पे अपना। न्यायिक हिरासत है पुलिस? नहीं, यहाँ पे न्यायिक अपेक्षा रहेंगे जी।
पुलिस कस्टडी में जाएंगे, जो है पुलिस कस्टडी तो देगी ही पूछताछ करने के लिए। उमेश पाल वाली हत्याकांड साथ देखिए, जब उमेश पाल की अपहरण हुआ था तो इतना मीडिया हाईलाइटेड नहीं की थी, ना इतना अधिवक्ताओं को भी पता नहीं था क्या हुआ था उस समय, क्या नहीं। Points that are being raised by the lawyers over there. Of course, there's still no clarity as to who are the three who've been held guilty in this case. But of course, all the lawyers confirming that Atiq Ahmed has been held guilty in this case, that the quantum of sentence is likely to be pronounced shortly as well. And it's interesting, some of the lawyers over there saying that the Dhumanganj police could also be seeking remand of Atiq Ahmed in the killing, the murder of Umesh Pal on February 24th this year. In that case, Atiq Ahmed won't go back to Sabarmati jail in Ahmedabad. He'd likely be sent into judicial custody here in Uttar Pradesh itself. Ravish, thank you so much for joining us. We're slipping into a very short break. Stay tuned. News and updates will continue on the other side of this break. टाइमिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग टाइमिंग, किसी भी एक्शन को टाइमिंग से जोड़ते हैं कि ये फेयर था या नहीं फेयर था। जैसे मान लीजिए बीबीसी ने सरकार के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा दी तो कुछ हफ्तों के बाद उनके ऊपर आईटी की कार्रवाई हो गई। नहीं, मैं तो डॉक्यूमेंट्री के टाइमिंग पर सवाल उठाता हूँ। ये पूरी घटना 2002 की है, चुनाव है 2024 में, आप 2023 में देखा, तो आप इसके टाइमिंग की क्यों बात नहीं कर रहे हो भाई? और जहां तक ये इनकम टैक्स के टाइमिंग की बात है, मैंने भी पूछा किसी को, ये 3 साल से इनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है। अब कोई अपने आप को कानून से ऊपर मानेगा तो कोई नहीं है कानून के ऊपर, सबने कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। This is my state, this is my home, these are my netas, these are my issues, these are my people, this is my election, this is my state Karnataka. Watch State of War Karnataka, Monday to Friday, 6:30 p.m. only on India Today. Make the question 100% clear. You're talking about the Indian team, I suppose. I think we just picked at the right time. We always have that belief. आपके पास flamboyance थी. हम आपके आभारी हैं. Tell me honestly, between yesterday and now, have you cried? Oh, come on, Kapil. एक सपनों का वर्ल्ड कप जो पूरे देश का है। यही पर तो जहां सजा गया था इसी वानखेड़े स्टेडियम पे फाइनल है। कैन यू इमेजिन तुम्हारे हाथ में वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होगी।
चलो शुरू करें फिर, पीछे चलें, याद करें। 2023 के 75 दिन हुए हैं। मैं उन 75 डेज की ही बात आज करना चाहता हूं। इन 75 दिनों में देश का ऐतिहासिक ग्रीन बजट आया। इन 75 दिनों में कर्नाटका के शिवमोगा में एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। इन 75 दिनों में मुंबई में मेट्रो रेल का अगला फेज शुरू हुआ। इन 75 दिनों में देश में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज चला। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे शुरू हुआ। इन 75 दिनों में यूपी उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ। अब से कुछ घंटे पहले ही भारत बांग्लादेश गैस पाइपलाइन का लोकार्पण हुआ। ये 75 दिनों की ही इतनी लंबी लिस्ट है कि समय कम पड़ जाएगा। और मैं 75 दिन की कुछ बातें इसलिए दिखा रहा हूं कि यही इंडिया मूवमेंट का ही तो रिफ्लेक्शन है। News coming in right now. Massive protests across Karnataka over quota row. Muslims, Banjaras and Lambanis hit the streets. BJP flags being removed by protesters from the Lambani community. They are unhappy with the reservation issue in Bagalkot. This is happening. Muslim community members protest against the government for 4% quota which is being removed for the community in the Vijayanagara district. These are images of those protests that are happening in Karnataka, those images from Shivamoga, communities that are out on the streets, some of those protests that have turned violent, BJP flags being removed as well. Massive protests across Karnataka over quota row. Muslims, Banjaras and Lambanis hit the streets. BJP flags are being removed by protesters from the Lambani community. They are unhappy with the reservation issue in Bagalkot. This is happening in Muslim community. As far as Muslim community members are concerned, they're protesting against the government for 4% quota being removed for the community in the Vijayanagara district. My colleague Sagai Raj is now joining me live at the moment. Sagai, we're bringing to our viewers images of those protests that are happening in Vijayanagara, in Bagalkot, as well as in Shivamoga, as well. Various quota rousters and protests that are happening at the moment. Give us more details about these protests and how is the government responding to these? See, the government has hit out at Congress stating that it is a Congress-sponsored protest. In fact, yesterday there was a massive protest in Shikaripura, the home constituency of former Chief Minister B.S. Yediyurappa, where the community, the Banjara community, pelted stone at his residence and also torched tires and protested across the constituency. And following that, today we have seen a protest in many parts of Karnataka, especially Hospate and Vijayanagara, where Lambani community members are also protesting, and we have also seen the Muslim community which is also protesting against the reservation which has been done by Karnataka government recently. Remember, there is a division with the reservation which has come forward, and people are unhappy because much before this particular internal division of these kind of reservation, they were getting a bigger part to them, bigger share to them. After this particular division, they feel that they have been betrayed by the government, and now they are getting lesser percentage than what they used to get before, and they are demanding the government to go ahead and revoke the old reservation policy. And they have also said that the Sadashiva committee, which has submitted a report in 2012, was unscientific and the government should not follow, and there are a lot of pros and consequences which has been still discussed. And in fact, that particular committee report is not been publicly debated either in the assembly or any of the forum, and much before even debating and discussing on that, the government was in a hurry to implement this particular reservation quota, and now they demand that it should be revoked as soon as possible, and they will continue the protest against the BJP government.
Okay, so trouble mounting there for the Karnataka BJP government ahead of those very crucial assembly elections. Sagai, thank you so much for joining us with all of those details. Let's listen in to BJP MP Tejasvi Surya. My request to you is to ask the Congress leaders as to why till yesterday this violence wasn't there. The reservation that they were demanding, more than that the government has given. There is absolutely no cause for any grouse, any cause for any anguish. In such a scenario, if there is violence, any common sensical person would draw only one conclusion, that this is a conspiracy, that this is a violence that is being orchestrated by the Congress party to create unrest in Karnataka so that they can make some quick political gains. So that is what the BJP has to say, that this violence is being orchestrated by the Congress party. Now, the Bommai government in Karnataka has tweaked the reservation policy to take away about 4% reservation, which was meant for Muslims from the OBC list, and distribute it equally between the two dominant castes of Lingayats and Vokaligas. The move has triggered a political war and protests across the state. Political quake in poll-bound Karnataka over Bommai government's big move to scrap 4% Muslim quota a month before assembly polls. The 4% Muslim quota has been shared between Vokaligas and Lingayats, two of the most dominant caste groups in the state. Muslims are now clubbed in the 10% quota for economically weaker section. We have shifted them to EWS, economically weaker section, and this 4% has been distributed, and this now they will be shifted to 10% pool, economically weaker section pool. And the criteria are same. Here also economically weaker sections will be considered in backward class. The similar thing will be considered in 10% pool economically weaker section. So we have done justice to everybody. The nixing of Muslim quota move sparked a big attack from opposition, Congress and Muslim groups, who accused the BJP of giving a raw deal to Muslims. The move also sparked protests as angry members of the scheduled caste Banjara community hit the streets against the scrapping of the reservation. Violent clashes broke out in Shivamoga as protesters pelted stones at Yedurappa's office and residence in Shikaripura. AIMIM chief Asaduddin Owaisi too slammed Modi government, saying it is impacting education of Muslims through banning hijab and ending quota. On behalf of the Congress party, I would like to condemn the decision of this government. Politically, they are trying to do it. The Congress party, as soon as we form the government in May, we are going to scrap this. Muslims were given 4% reservation, not on the basis of the religion. Constitution does not say the reservation should be on religion. गवर्नमेंट को भी मालूम है कानून का हिसाब से ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये 4% क्या था 2B में वो निकाल के 10% वो तो ओपन है, वो भी इकोनॉमिकल वीकेस्ट सेक्शन है, वो इसलिए वो मुसलमानों को उसमें फाइट करना पड़ता. But the big quota move was hailed by Home Minister Amit Shah, who slammed Congress for providing quota for Muslims, calling it appeasement. कांग्रेस सरकार ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया था. वो माइनॉरिटी का रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर वोकलिगा और लिंगायत समाज को देकर बंधारण के स्पिरिट को लागू करने का काम किया है. BJP CT Ravi also lashed out, reiterating that there isn't a single state that has a religious quota. दूसरा स्टेट में मुस्लिम अलग रिजर्वेशन है क्या? कौन सा स्टेट में है? संविधान में ऐसा मुस्लिम रिजर्वेशन दिया नहीं, रिलीजियस रिजर्वेशन दिया नहीं.
कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ सोचता है ना, वो लोग मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में बात करता है. While Lingayat quota is up to 7% from 5% now. The Vocaligas will get 6% quota, up from 4% in jobs and education. Will the splitting of Muslim quota between Lingayats and Vocaligas impact the elections? With Sagai Raj and Nagarjun Dwarkanath in Bengaluru, Bureau Report, India Today. So that is, of course, what has happened as far as the Muslim community is concerned. 4% of their quota now has been distributed between Vocaligas and Lingayat castes in Karnataka. The Chief Minister, you heard him speak earlier over there, Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai there clarifying that Muslims have been shifted to the 10% EWS quota, and hence there is no infringement upon their rights. They still will have quota as far as the reservation policy of the government is concerned. But as you can see, protests have broken out across the state with several caste groups coming out, including Banjaras, who are in fact Lambinis as well, who are in fact protesting against the fact that there has been an internal division of the SC quota in Karnataka. Now, in an exclusive conversation with India Today, H.D. Kumaraswamy says he doesn't support the quota move of the BJP. Listen in. So let's address the elephant in the room. In the last 2 days, the reservation topic is a hot topic in Karnataka. You come from a Vocaliga community. Are you happy that your community has got 2% extra? 4% has been removed for the Muslim, and now you have 2% from them. Here, brother, by happy thing, nothing will happen. If myself, if I tell that we got 2% extra additional reservation for our community, that is not the issue. Here, the way in which this present government, BJP, they announced, without applying their mind, only to get the benefit of the votes from certain community, without any preparation, without any recommendation from any your committees, they announced single-handedly to create controversy between the communities. That is their main intention. Between Muslims and Lingayats, Muslims and Vocaligas. Definitely, they removing the reservation quota of Muslim community and distributing those 4% to 2% to Vocaliga and 2% Lingayat. They wanted a reaction from Muslim community to create violence from that kind of development. That's a big charge. That's a big charge that you're making. That yeah, definitely. That is their only intention for that only. How they will going to implement this? It will be on the only on letter. That's all. There is no strength for that. The central government still has to approve it in the parliament. Not only central government. Legalities is there. Legalities, formalities are there. How they will going to fulfill the question raised by several communities? Congress has promised if they come to power, they'll revoke all this reservation, come back to the normal one, and then think about how to do it. What is JDS plan? Will you also revoke? My intention, our decision, whoever the beneficiaries neglected by these governments, by these parties, whatever guidelines given by Honorable Ambedkar when he introduced this constitution for the entire country, in that actually the main intention to maintain the equality to all. But where is the equality? We are seeing inequality in every section, every issues. We want equality. What the Ambedkar ji was, what is his intention when they formulated this constitution? For that actually we avoid. Now, H.D. Kumaraswamy's interview to India Today has set off political ripples in poll-bound Karnataka. Kumaraswamy has claimed in an exclusive interview that he has been approached by both the BJP and the Congress
for an alliance. The HDK in fact claimed he has met both BJP and Congress messengers, thereby sparking speculation once again on whether the JDS will play the role of kingmaker. The JDS chief claims that both parties have reached out to keep a plan B ready in case of a hung assembly. As expected, Kumaraswamy's interview has sparked a fierce denial from both sides. Karnataka Congress chief DK Shivakumar and former Chief Minister Siddaramaiah have both rubbished HD Kumaraswamy's claim, reiterating that the Congress has so far never approached Kumaraswamy or any member of the JDS for a tie-up. Will Kumaraswamy this time go with BJP or Congress? How do you see the election? We will going to form the government on our own by the blessing of this state citizens. Do you have pressure from the centre saying come with us? Have they already spoken to you? Offer is there. You have already offered? Offer is there. Okay. Everybody offering me. Even Congress is offering? Everybody is offering me. They know their strength. What is their strength internally they know. Okay. But publicly they are telling we will get 140, 150. That is their announcement. But internally internally I know their strength. Okay. What is the some important persons who are approaching to thinking that this time also fracture audit will be there. But according to me, whatever I worked very hard work for 18 hours a day, how the people's response, I have full confidence that our government will be formed by the blessings of this Karnataka voters independently. So I'm stressing on this point because even before the election, you are saying both the national parties have given you an offer already on the open platter, saying, Mr. Kumaraswamy, please support us. Because of their minus point, they know the real strength. I know my strength now. From last 3 elections, where we lapsed our working style, because why we failed, all those things, we worked it out. How to solve those problems, how to settle it. On that basis, I am telling you, in this election, because of 2 national parties' attitude, people want a regional party. This time they were going to choose Janata Dal to form the government on their own. This is my impression wherever I am going throughout the state. Sir, Kumaraswamy says that they have open offer from both BJP and Congress, sir. Exclusively spoke to India Today and said that people are approaching him to join hands with him to form the government because they won't get the majority number. It is all false. We have not approached anyone. We are confident. We will form the government on our own. We will win on our own. We don't need any of whatever he is telling. I don't know who has. Let it come out with the names, sir. Who has come out. It is totally false. HD Kumaraswamy spoke exclusive to India Today in an interview. He went on to say that he has offers from both Congress and BJP to join hands with them, stating that you won't get majority. When they are speaking in public, they say that they will get majority, but in practical, that will not happen. How do you see this? See, this is a statement which deliberately being said to create a confusion. Karnataka state has seen a not so stable government and coalition government, and we have seen an Operation Kamla government. It has been a loss to the state, and this time I am very sure that people will select a single party, and they know that BJP is the most corrupt party and the alternate to the BJP is only the Congress party. So we are coming back to power with a full majority. So there is no any confusion amongst the minds of the people, nor with us. So Mr. Kumaraswamy wants to, dive into some kind of water which is not trouble, but he wants to create some kind of situation which looks like trouble. Slipping into a short break, coming up next, Harry's first visit after tell-all book and documentary. Harry wages legal war against UK press. Details on the other side of this break.
Lately, we are witnessing a slew of layoffs across the tech and startup sector. Will this spill over to the IT sector, especially Indian IT companies as well, since they've lately been facing headwinds? Well, I think great question to start off with. I think there will be headwinds, of course, within the IT sector as well. You must understand that the premise at which this is happening is caused by multi-fold reasons. One is, of course, this is a recessionary fear that's gripping the world. There's this inflated employee-led costs because of the surge in hiring that happened a couple of years ago. The funding winters that's not allowing the startups to really kick off the way it's supposed to. And also a lot of incubated projects not seeing the light of the day. So obviously there is that extra pressure that will come across, and India being the host of a large amount of tech talent will not be steered away. But what I can tell you is that a large part of these impacts may hit the developed markets more than what it would be for the Indian market. All right, sir. But what about BFSI and IT? Especially as we see, major IT companies in India have a lot of exposure to the banking crisis going on in the West. Is hiring going to slow down for BFSI verticals, or are we going to see layoffs in the time to come? See, overall, the IT sector, Akansha, has seen a little bit of a slowdown already. So if you notice the last quarter or more, there has been a slowdown in the overall numbers that have come. So in terms of overall spend, definitely there will be a little bit of a little lesser spend from IT point of view from banking and financial services sector. But I would not want to call out the recent banking stories that have come out or the crashes that have come to be representative of the banking industry overall. Welcome back. Prince Harry is in London to attend legal proceedings in a phone tapping and privacy case involving a British tabloid. Experts believe Harry's presence at the High Court is a sign of the importance he places on the case. Associated Newspapers, however, is asking the High Court to end the claims brought by Harry. The estranged member of the British royal family, Prince Harry, is back in the UK. And this time to wage a war against British press. Prince Harry has accused the Daily Mail, a British tabloid, of invasion of privacy and unlawful collection of data to the extent of tapping his phone. Dressed in a black suit and a grey tie, Harry walked into the High Court smiling for the cameras. Daily Mail's parent company, Associated Newspapers Limited, has dismissed charges as preposterous smear. Legal experts say Harry's appearance in court is indicative of confidence in his chances of winning the case. You hear that? That is the sound of hearts breaking all around the world. She's becoming a royal rock star. And then... In Harry and wife Meghan Markle's Netflix documentary, the couple claimed a witch hunt by the British press with an aim to vilify Meghan on basis of her race, American nationality and past divorce. Pain and suffering of women marrying into this institution, this feeding frenzy. The duo went after the senior-most royals, accusing the institution of monarchy of driving her suicidal. I didn't want history to repeat itself. Just as fans were recovering from the shock from the docuseries Bombshells, Harry went ahead and dropped another one in a tell-all memoir called The Spare. Harry accused his brother and next in line to the throne, Prince William, of physically assaulting him. He detailed how his father and Britain's King Charles of joking about his parentage and how William and Harry urged their father not to marry Camilla and consuming cocaine at the age of 17. As Harry goes to the court over his battle with the British tabloid, his Cold War with the royal family will have to be put on hold. On his first visit after his explosive documentary and book and the subsequent ugly spat with the royal family, will Harry try to make amends with the royal family?
Bureau Report, India Today. And that's a wrap on this bulletin. For the latest news and updates, you can log on to indiatoday.in. You can also download the India Today app. Thanks for watching. Age is just a number. This line fits perfectly for Dharam Chand from Haryana. He is 86 but is still running, jumping and winning medals. His secret? मैं बच्चों को सबको यही प्रेरणा देता हूँ कि आप मेरी तरह ग्राउंड के साथ जुड़े और सब ऐबों से मुक्त होकर आप अपनी सेहत को, अपने शरीर को ठीक रखें। सन 68 से लेकर आज तक मैं कंटिन्यूड रेगुलर पोजीशन लेता आ रहा हूँ। The 4th National Masters Athletics Championship, which recently took place in Kurukshetra, saw more than 2,400 participants from 22 states. 72-year-old Mahavir Singh is one of them. मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, भाई नशे से दूर रहें और खेलों से जुड़ें। आप खेलना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं कोई मेडल जीते। मेरे को 40 साल खेलते हुए हो गए हैं और 20 साल से मैं इसमें मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन में खेलता हूँ। Several women also participated in different events. हमारे टाइम में लड़कियों को खेलने का मौका नहीं मिलता था, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लगता है कि ये हमें मिला है कि इस उम्र में आके भी हम मेहनत करके अपनी अचीवमेंट दे सकते हैं। और एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस पे अगर आप आएंगे तो शायद मुझे जो लगता है, अपने जीवन से जो लगता है कि हम किसी गलत ट्रैक पर नहीं जाएंगे। The message these athletes are sending is, it is never too late to chase your passion. Bureau Report, India Today. To make the question 100% clear, you're talking about the Indian team, I suppose. I think we just picked at the right time. We always had that belief. आपके पास flamboyance थी. हम आपके आभारी हैं. Tell me honestly, between yesterday and now, have you cried? Oh, come on, Kapil. Aji. एक सपनों का वर्ल्ड कप जो पूरे देश का है। यहीं पर तो जहां सजा गया था इसी वानखेड़े स्टेडियम पे फाइनल है। कैन यू इमेजिन तुम्हारे हाथ में वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होगी। चलो शुरू करें फिर, पीछे चलें, याद करें। History is testimony. You can never predict which party forms the government in Karnataka. And that's where my expertise comes handy. Watch me, Nagarjun Dwarkanath, on India Today. And a warm welcome to India Today. I'm Paulami Saha. These are the headlines we're tracking at the top of this hour. Don Atiq convicted in 2006 abduction case by Prayagraj court. Quantum of sentence is likely to be pronounced today. Brother Ashraf and 7 others acquitted. Rahul writes to Lok Sabha Secretariat over his eviction notice, says will abide by the law, cites happy memories during time spent there. United States monitors Congress leader Rahul Gandhi's case in Indian court, says the US engages with Indian government on a shared commitment to democratic values.
HD Kumaraswamy sets off massive speculation in Karnataka, claims both BJP and Congress in race to woo him. This is an India Today exclusive. Kumaraswamy this time go with BJP or Congress? How do you see the election? We will going to form the government on our own. Do you have pressure from the center saying come with us? Have they already spoken to you? Offer is there. You have already offered? Offer is there. Okay. Everybody offering me. Madras High Court settles Jaya legacy war, dismisses O. Pannirselvam plea, stage set for EPS to be AIA DMK leader. OPS camp moves division bench of Madras High Court. Our top story this afternoon, gangster-turned-politician Atiq Ahmed has been convicted in the 2006 Umesh Pal kidnapping case. The Prayagraj court, in fact, today held Atiq Ahmed and two others, in fact, guilty of kidnapping Umesh Pal, who was the key eyewitness in the 2005 BSP MLA Raju Pal murder case. In fact, Pooja Pal, the wife of former BSP MLA Raju Pal, is now joining us live. पूजा जी, आपने प्रयागराज कोर्ट का फैसला सुना होगा. उनका अभी तक जो सेंटेंस है कि कितनी सजा होगी ये सामने नहीं आया है, पर उन्होंने ये माना है कि उमेश पाल जी के मर्डर केस में, किडनैपिंग के केस में अतीक अहमद और दो और लोग जो हैं, 10 को उन्होंने गिल्टी नहीं करार दिया है, पर 3 लोगों को उन्होंने गिल्टी करार दिया है. उनमें से एक अतीक अहमद है. उसके बारे में आपका क्या कहना है? पूजा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? Okay, just give us a few minutes to, in fact, fix that audio line with Pooja Pal, who is the wife of late Raju Pal. Umesh Pal was a key eyewitness in the murder, the 2005 murder of BSP MLA, former BSP MLA Raju Pal. Umesh Pal was murdered earlier this year on February 24th in broad daylight, for which Atiq Ahmed is also charged. But today, a Prayagraj court, in fact, convicted Atiq Ahmed and 2 others in a 2006 Umesh Pal kidnapping case. Listen in to what the lawyer had to say. कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है एंड अप्रोक्सीमेटली 3 का कंफर्मेशन इस जो अक्यूज हैं उसमें अशरफ, अतीक एंड फरहान. The conviction has been confirmed. Conviction for kidnapping and abduction and criminal conspiracy. ये है. बाकी 10-15 मिनट और लगेगा इसका पता लगने में. Okay, we believe that Mrs. Pooja Pal, wife of late Raju Pal, is joining us live at the moment. पूजा जी, आपने प्रयागराज कोर्ट का फैसला सुना होगा. अतीक अहमद और 2 लोगों को दोषी करार दिया गया है. उमेश पाल किडनैपिंग केस में 7 लोगों को बरी कर दिया गया है. इसके बारे में आपको क्या कहना है पूजा जी? देखिए, जो कोर्ट का आदेश आया है उसका मैं स्वागत करती हूँ, मगर इलाहाबाद में जितने भी इन लोग से प्रताड़ित लोग थे, परेशान लोग थे, कहीं ना कहीं कई दिनों से टकटकी लगा करके न्यायमूर्ति को देख रहे थे कि जो एक जजमेंट आएगा वो इलाहाबाद के उन जो परेशान लोग हुए उनसे, उनके लिए बहुत न्यायहित आदेश आएगा. और जिनको सजा मिली है, जो दोषी पाए गए हैं, मैं कोर्ट का बहुत बहुत वो करती हूँ. मगर अशरफ जैसे इस ऐसे केस में अशरफ जैसे लोग का छूट जाना भी न्यायहित के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अशरफ को भी कम आंकना गलत होगा. क्योंकि मैं एक अपने ऊपर हुए एक जो हमारे गवाह हैं, आई विटनेस हैं, रुखसाना जी के बारे में बताना चाहूँगी कि अभी लगभग 4-5 साल पहले वो हमारी गवाह हैं, उनके घर पे घुस करके
अशरफ का शूटर जो मुबारक है घर में घुस करके। पूजा जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए यहाँ पर रोकना चाहूंगी। कोर्ट का फैसला आ गया है इस किडनैपिंग केस में। कोर्ट का फैसला है लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अतीक अहमद। दैट्स द बिग ब्रेकिंग न्यूज दैट्स कमिंग इन फ्रॉम द प्रयागराज कोर्ट राइट नाउ। Atiq Ahmed has been sent into life imprisonment for the 2006 kidnapping of Umesh Pal, who was a key eyewitness in the murder of former BSP MLA Raju Pal. 2006 kidnapping case, Atiq Ahmed has been pronounced guilty and sentenced to life imprisonment. 2 others have also been held guilty in this case. What we're learning from our reporters on the ground is that the court has in fact pronounced life imprisonment sentence for all 3 of the accused who have been convicted in this case. पूजा जी, पहले तो आपसे इस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है वो अतीक अहमद और 2 और दोषी करार, जिनको दोषी करार दिया गया है, माना गया है, उनके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है। और फिर आप जो कह रही थी कि अशरफ को दोषी करार नहीं दिया जाना, वो एक बहुत बड़ी बात है। आप मानती है कि एक तरह से इनजस्टिस हुआ है? जी 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 वही मैं कह रही हूँ कि जो इन लोगों को जो सजा मिली है वो ठीक है, मगर अशरफ को भी छोड़ देना ये भी न्याय हित के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि मैंने बताया अभी जैसे कि जब अशरफ जैसे लोगों को सजा नहीं मिलेगी तो उनसे संबंधित जो उनके साथी सहयोगी, जो उनके शूटर्स हैं, जो बाहर अभी भी घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी मन बढ़ेगा। और ये जो आज डिसीजन आया है उनसे अशरफ के शूटर्स का मन बढ़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि 4-5 साल पहले मेरे एक गवाह हैं राजूपाल हत्याकांड की, आई विटनेस हैं रुखसाना जी, उनके घर में उनका ही शूटर्स मुबारक, उन्हीं का गांव का बंदा शूटर्स है, वो उनको मारने की नीयत से उनके घर पे गोली चलाया। और चलाने के बाद मतलब ऐसे उनके शूटर्स आज खुले घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अशरफ को सजा न मिलने का मतलब ये है कि उन लोगों का मन बढ़ेगा और बल बढ़ेगा। और जो हमारे गवाह हैं, चाहे वो रुखसाना जी हो, ओम प्रकाश पाल जी हैं और शादिक जी हैं, तो ऐसे जो हमारे गवाह हैं उनको कहीं ना कहीं बाहर इनके शूटर से खतरा रहेगा। और वो सही से जो एक न्यायोचित गवाही होती है वो कहीं ना कहीं देने में फिर दिक्कत उनको आएगी। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि एक जो आज फैसला आना चाहिए, और इलाहाबाद में जो प्रताड़ित लोग हैं उनको देखते हुए आज एक ऐसा फैसला आना चाहिए था जो कि इलाहाबाद में जो इनका जो आतंक देखा है उनको आज न्याय मिलता। ओके, तो पूरी तरह से न्याय नहीं हुआ है, ये आपका मानना है। पूजा जी हमारे साथ बने रही है। समत, माय कॉलीग, इज आल्सो जॉइनिंग अस एट द मोमेंट। Samant, bring us the latest on what the court has said as far as pronouncing Atiq and 2 others guilty is concerned and sending them to life imprisonment. Why have the 7 others, including Ashraf, been acquitted in this case? Samant. Well, that's a big breaking coming in on India Today TV. What we are getting, that court has ordered life imprisonment for Atiq Ahmed and 2 others. That's a big breaking because earlier around 12 p.m. court had already said that they were found guilty. And as you questioned, others, 7 others have been left out, especially the name of Ashraf, which you are calling out. And the wife of Raju Pal is questioning why Ashraf was left behind. That could be a bigger question, because in a way, Ashraf was the one who was getting the benefit after the death of Raju Pal, because he was the BSP MLA Raju Pal. And Ashraf was defeated by Raju Pal, and that's why Atiq and Gang got BSP MLA Raju Pal killed, which in a way gave favor to Ashraf. And with court decision of saying that Ashraf has nothing to do with this case of abduction of Umesh Pal, that's quite evident, and now family is raising questions over the same. I have been joined by a lot of advocates of Prayagraj. Let me take to them how they are seeing this particular decision, because they have seen the journey of Atiq Ahmed so far. Atiq Ahmed का जर्नी आप लोगों ने देखा है, किस तरह से कोर्ट में हियरिंग भी हुई है। आप लोग कैसे देख रहे हैं जिस तरह से लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है? इलाहाबाद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश कह लीजिए, पूरे देश में उस आततायी व्यक्ति की आक्रांता था। जिस प्रकार से वर्तमान में ये जो आज हियरिंग चल रही है, जिसमें आज सजा सुनाई जा रही है, ये राजू पाल हत्याकांड का प्रमुख गवाह उमेश पाल था। इसने अपनी गवाही देने के बाद जो अभी आप लोगों ने अभी चल भी रहा है, जिसमें पूरी मीडिया, पूरा सरकार
जुडिशरी तक जो इन्वॉल्व है वो उसकी हत्या भी हो चुकी है। आज जो डिसीजन आने वाला है वो उमेश पाल के अपहरण का जो है आ चुका है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में आ रहा, अभी टाइप हो रही है, पढ़कर वो सुना दिए, चूंकि वहाँ बहुत गहमिया गहमी है, अधिवक्ता साथी काफी मात्रा। परिवार ये जो राजू पाल की जो धर्मपत्नी है वो सवाल उठा रही है, क्योंकि अशरफ का ही सबसे ज्यादा फायदा इसमें होना था मृत्यु के बाद, क्योंकि विधायक वही हारे थे राजू पाल से, तो अशरफ को तो बेगुनाह साबित कर दिया है कोर्ट ने। निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी मुकदमे होते हैं जो 120B के वो अपराधी हैं उनके ऊपर चार्ज बनता है। ये आतताई, ये इनका एक पूरा सिंडिकेट है, ये हत्याएं कराते हैं, अपहरण कराते हैं, इनका एक पूरा वो है। अब चूंकि जुडिशरी है, सबूतों और गवाहों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर ही कोर्ट अपना डिसीजन देता है। उसी लिहाज से आज जो है अशरफ सहित 7 लोगों को दोष मुक्त किया गया उस केस में, और अतीक सहित 3 लोगों को जो है उसमें जो है सजा हुई है। यू गाइस आर आल्सो द एडवोकेट्स एंड आल्सो द लोकल्स ऑफ प्रयागराज। आप लोग अतीक अहमद को सजा मिली है, कैसे देखते हैं? क्या कितनी बड़ी चोट है अतीक अहमद और गैंग के ऊपर? देखिए, अतीक अहमद एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी है, ठीक है, और जैसा कि कोर्ट ने आज सिद्ध भी कर दिया है, उनको दोषी करार दिया गया है। और आज के मुकदमे में 364 का में ए में, हाँ, उसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान है, लेकिन अभी उन्होंने सजे से खुश नहीं है, उसमें 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है। एक सवाल लोग जानना चाहते हैं कि क्या अब अतीक अहमद, क्योंकि यहाँ पर उम्र कैद मिली है, प्रयागराज कहीं जेल में किसी रहेगा, नैनी जेल या किसी भी जेल में, या उसको वापस साबरमती लिया जाएगा? लॉ क्या कहता है? नहीं, लॉ क्या, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इनको यहाँ लाया गया। तो पहले तो इनको जो भी सजा हुई है, इसलिए हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे इन्होंने कहा गया कि वापस ले जा सकती है। अब सर उनसे हो सकता है अभी तो एक मामला हुआ है, उमेश पाल जो मेन गवाह था, मुख्य गवाह। आप बताइए मुझे, मेरा सवाल यही है आपसे कि क्या प्रयागराज जेल में रखा जाएगा या वापस साबरमती जेल ले जाया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर तो उम्र कैद की सजा दे दी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई आप हाईकोर्ट जाइए। देखिए, निश्चित तौर पर इलाहाबाद की इस धरती पर पला बढ़ा हुआ उसका जो है एक आक्रांता का जो अपना बिसात बिछाया हुआ है, वो संपूर्ण इलाहाबाद में तो उसका है, और निश्चित तौर पर इलाहाबाद में उसको रखना ये न्यायोचित नहीं है। इसको कहीं ऐसी जगह रखा जाए, तगड़ी जगह रखा जाए, जहां इसकी सुविधाओं को जो है रखा जाए कि उसको सुविधा बहुत न मिल पाए। आज अगर नैनी जेल में तमाम ऐसे अपराधी हैं जिससे इसे संलिप्तता है, जिसके गुर्गे हैं, इसके तमाम ऐसे लोग हैं, अगर नैनी जेल में ये रखा जाता है तो निश्चित तौर पर एक नैनी जेल इलाहाबाद में बहुत बड़ा कांड यहाँ से वो करा सकता है। सिक्योरिटी कंसर्न इन्होंने बताया, पर जो लॉ है वो क्या कहता है? अगर किसी कोर्ट ने, सपोज MP-MLA कोर्ट ने यहाँ उम्र कैद की सजा दे दी है, तो अब क्या करा जाएगा? कैदी को यहाँ रखेंगे या साबरमती रखेंगे? अभी तो वो साबरमती का ही मुलजिम है, क्योंकि उसको साबरमती से छुट्टी लिया गया है, न कि वो यहाँ का मुलजिम है। उसको रेफर किया गया था पहले कोर्ट में साबरमती में। अरे उनके लग जाएगा भाई, उनके पास लेके नहीं जा रहा। अभी अंदर जाइए, क्या कहेंगे आप? जो आजीवन कारावास, पहले ये भागवत तो कम करिए आप, आराम से तो ये मचाना बारी बारी आप लोग कर लीजिएगा जब आप तलब। Was saying at the moment, the big news that's coming in from the Prayagraj court is that Atiq Ahmed and 2 others have been convicted. ठीक है सांस रहिए तो बोलेंगे, तब तो बोलेंगे। क्या भैया ज़रा ID हटा लीजिए, कोई किसी वाली बात नहीं, कष्ट है उनको। एक लोग पूछिए सवाल, उसके बाद मत थोड़ा फैल जाओ, कैमरा तो आने दो, कैमरा नहीं आता। अरे यार भाई थोड़ा फैलिए ना, हफ्ता मचा लिए जी जी माता जी, इसलिए घबराहट होती है। अरे ना यार, किसकी आईडी है? क्या कहेंगी? अभी थोड़े क्या फैसला आया? पहले आप 10 साल की सजा अतीक अहमद, आजीवन कारावास, ये बताइए क्या कहेंगे इस पे? हाथ हटा यार, बेटा शांत हो, आप बता रहे हैं। अरे पहले बात तो करने दीजिए। भाई तो पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे होइए। आप लोग बात प्लीज 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 यार,
Of course, the media trying to get a reaction from the family of Umesh Pal. Remember that a Prayagraj court has in fact pronounced Atiq Ahmed and 2 others guilty in the 2006 kidnapping case of Umesh Pal and has sentenced them to life imprisonment, also penalized them with 1 lakh rupees fine each. Those are the details that are coming in from the court at the moment. But the family seems very distraught at the moment. They are awaiting more details of the order which has been pronounced by the Prayagraj court. Atiq Ahmed and 2 others have been held guilty, whereas 7 others, including his brother Ashraf, have been acquitted in the case. That is a concern area for the family members. Earlier, you heard from Pooja Pal, Samajwadi Party MLA and wife of slain BSP MLA Raju Pal, saying that there seems to have been some injustice which has been done because Ashraf has been acquitted in this case. Mrs. Pooja Pal, wife of late BSP MLA Raju Pal, is live with us also at the moment. Pooja ji, आपने लॉयर की बात शायद सुनी होगी, लॉयर्स में भी, क्योंकि काफी सारे वकील इकट्ठा थे प्रयागराज कोर्ट में. We'll try and reconnect with Pooja Pal. Pooja Pal, Samajwadi Party MLA, sitting MLA and also wife of former slain BSP MLA Raju Pal, in fact earlier was a little unhappy with the court's decision to let Ashraf get away in this case. Ashraf, the brother of Atiq Ahmed in this case, has been acquitted as far as the Prayagraj court is concerned. Pooja Pal is back with us. Pooja ji, आपने लॉयर की बात सुनी होगी, वकीलों में भी काफ़ी सारा आक्रोश था, वहाँ पर कोर्ट रूम में काफ़ी सारे स्लोगन्स भी रेज किए गए थे कि हत्यारों को फांसी की सज़ा दो. आप इस सज़ा से संतुष्ट है कि नहीं? और अशरफ की जो आप बात कर रही हैं, आपको लगता है कि अशरफ को इस तरह से छोड़ देना, उसका जो आतंक है वो बढ़ता रहेगा और चलता रहेगा इलाहाबाद में? जी, मैं वही बात अभी कर रही थी कि अतीक को और अशरफ को अलग ना समझा जाना चाहिए था, क्योंकि बराबर से एक दूसरे का सहयोग करते हुए सब जो यहाँ पे घटनाएं हुई हैं उसका वो करते हैं. तो आज जो कोर्ट से जो फैसला आया है, तो जो फैसला आया है वो उसका सम्मान करती हूँ, मगर जो अशरफ का छूट जाना था वो न्याय हित में नहीं सही है. जी पूजा जी, आपने भी एक तरह से अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए मांग की थी जब उमेश पाल की निर्मम हत्या कर दी गई थी फरवरी के महीने में. तब भी आपने कहा था कि आपको थ्रेट्स आते हैं, उसके बारे में बताएं पूजा जी. मैं उससे पहले भी सुरक्षा की मांग की थी. जब मैं कोर्ट में गवाही देने जा रही थी, मैं उसके पहले भी सुरक्षा की मांग की थी, अपने गवाहों के लिए सुरक्षा की मांग की थी. मगर अभी जब ये उस समय तो नहीं बढ़ाया गया, मगर जब ये कांड हुआ तो 2 सुरक्षा गार्ड घर पे लगाए गए हैं. और जिस दिन तारीख रहती हम लोगों की सीबीआई कोर्ट लखनऊ में, उस दिन हम लोग को वहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई जाती है, जिससे कि मुझे लगता है कि जो मुकदमा लड़ रहा है उसको एक सही और अच्छी सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो पैरवी कर रहे हैं मुकदमे की, वो आप समझ लीजिए आजीवन खतरा वो करके ले रहे हैं. और जब हम ही नहीं बचेंगे, गवाही नहीं बचेगा, तो फिर कैसा मुकदमा और कौन गवाही दे पाएगा? नहीं जा पाएगा जब वो खुद ही नहीं सुरक्षित रहेगा. तो इसलिए एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था मांगी थी, जिससे कि हम लोगों की वास्तव में सुरक्षा हो पाए. जी पूजा जी, माफी चाहती हूँ आपको पहले काटने के लिए, पर आप दूसरे आई विटनेसेस के बारे में भी बात कर रही थी, आप रुखसाना की बात कर रही थी. किस तरह का खतरा बना हुआ है? दूसरे जो आई विटनेसेस हैं आपके पति के मर्डर केस में, उन पर किस तरह का खतरा बना हुआ है? जी देखिए, जैसे कि आज अशरफ को दोष मुक्त कर दिया गया, वो कर दिया गया, तो उससे ये मैं कहना चाह रही हूँ कि जो उससे अटैच जो शूटर्स हैं, जो उसके बात को मानने वाले, उसके बात को फॉलो करने वाले जो शूटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छा एक सबसे बड़े इनका एक इतना बड़ा कुनबा है शूटर्स का और आपराधिक लोगों का कि आप इन पे निगाह नहीं रख सकते कि कौन अंदर गया, कौन बाहर गया और कौन खतरनाक आदमी बाहर अभी है.
और मान लीजिए किसी भी गवाह को टच करना होगा, परेशान करना होगा, कोई घटना दुर्घटना करनी होगी तो कोई भी शूटर से कह सकते हैं। और इसलिए क्योंकि जब मेन ही आदमी सजा नहीं पाएगा तो जो इनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं जो इनके नीचे, तो वो कहाँ से डरेंगे, उनका कहाँ से हौसला खत्म होगा। तो कहीं ना कहीं एक मतलब अतीक को सजा पड़ने से बहुत सी चीजें में वो हुआ है, तो कहीं ना कहीं अशरफ को सजा न पड़ने से जो इनके जो शूटर्स हैं उनमें भी एक अलग प्रकार का जो दबाव बनना चाहिए था वो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाह रही थी कि जो आज ये अशरफ को छोड़ा गया वो न्याय हित के लिए सही नहीं है और गवाहों के लिए भी सही नहीं है और इलाहाबाद के जो पीड़ित परिवार है उनके लिए भी सही नहीं है। तो आप एक तरह से मानती हैं कि जो न्यायपालिका से आज सजा सुनाई गई है वो आधा अधूरा है, उससे आप निराश हैं? जी जी जी। आप जी ओके पूजा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। लेट्स लिसन इन टू द मदर ऑफ उमेश पाल। उसके साथ ये कॉलेज के लड़के और सब काफी चिल्लाने, इसने जिंदा छोड़ दिया, लेकिन मेरा बेटा लड़ाई लड़ता चला आया शेर की तरह। आज तक अतीक से किसी ने आंख नहीं मिलाया, चाहे जितना भी इसके नाम से केस हो, लेकिन मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा, अपने फैसले का इंतजार करते। लास्ट में उसका पूरा मामला तय हो गया था, खत्म हो गया। उसको ये उम्मीद थी कि अब मेरा फैसला फुर्सत, इसको सजा मिलेगी। तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया, साथ में 2 मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे। तो बताइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही विनती है कि इनको फांसी दिया जाए। अच्छा, अब सजा हो गई है, आप लगता है कि उमेश जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, ये तो उसका अपहरण में लड़ रहा था शेर की तरह, लेकिन जो अब लास्ट में 3 मर्डर उसने करा दिया, जेल से कराया है, ये आजीवन कारावास है। इसमें उसको अंदर क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या नहीं मिलती, इसलिए वो पुराना खुखार बदमाश है, पूरा आधा डकैत है, वो नोट के बल पे आगे कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही एक निवेदन है कि मेरे बेटे जैसे हत्या उसने कराई है, साथ में 2 सुरक्षा कर्मी गए हैं, तो इसने खाकी और काले कोट की इसने लिहाड़ी बेइज्जती कर ली, इसको फांसी की सजा सुनाई जाए। इसलिए कि हम लड़ने योग्य नहीं है, ये फैसला मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, अदालत के ऊपर। सीएम साहब से क्या कहेंगे? हम सीएम साहब से यही कह रहे हैं ना कि जैसे मेरे दरवाजे पे इस बदमाश ने अपने गुंडों को भेज करके और 3 को संहार कराया है, मेरे बेटे और 2 सुरक्षा कर्मी को, तो हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि मेरा बेटा उस समय वर्दी पे था और सुरक्षा कर्मी भी थे, कोई वैसे नहीं थे, गाड़ी से उतर रहे थे, उस समय इसने मर्डर कराया। इसने न कलम की इज्जत किया, न काली कोट की किया, न खाकी किया, इसलिए मर्डर के इसने तो दे दिया अपहरण का, लेकिन मेरे बेटे 3 मारे गए हैं। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि इनको फांसी दिया जाए, इनको जिंदा न रखा जाए। हाई कोर्ट में अपील करेंगे कि 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
इसमें अशरफ एक है, अतीक का भाई जो अशरफ है उसको बरी कर दिया गया है। टोटल 7 लोग बरी कर दिए गए हैं। लेकिन उसमें तो मेरे बेटे ने बताया था 10 लोगों के। वो सब जो वकील आएंगे हमारे तो सारी चीजें वो बताएंगे। अब ये है कि मेरे बेटे का जो मर्डर हुआ है उसमें तो किसी ने देखा नहीं, वो तो पूरा सीसी फुटेज में दिखा रहा है। अब उस पर जो भी निर्णय ले अदालत या मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय ले वो तो सीसी कैमरे में पूरा कैद है। आप फांसी की मांग कर रहे थे लेकिन उम्र कैद की सजा दी गई है, तो क्या आपको डर बना रहेगा आपके मन के अंदर, जैसा कि आप पहले भी बता रहे थे? हमने क्या कहा बेटा कि देखिए उसको आजीवन कारावास दिया है, लेकिन ये जेल के अंदर उसको पूरी सुविधाएं मिलती है, पूरी सुविधाएं मिलती, तो हम क्या जाने कि वहाँ से क्या सब कुछ करा सकता है। मतलब आप जेल में जाएगा लेकिन घटना को अंजाम दे सकता है? दे सकता है, अभी भी दे सकता है। आप उम्र कैद से संतुष्ट हैं? सजा मिली उससे संतुष्ट? जज ने जो जजमेंट किया है वो ठीक है, मैं उनकी बातों का विरोध नहीं करूंगी। उन्होंने जो क्योंकि मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। एक सवाल हो रहा है, ये किडनैपिंग वाला मामला था और इसमें जो अतीक का भाई अशरफ है वो भी आरोपी था, लेकिन वो दोस्त नीचे से उस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें दोनों पे एक ही धारा की तहत केस दर्ज किया गया था, लेकिन अशरफ दोष मुक्त हुआ। मेरे वकील आकर के इसका जजमेंट बताएंगे कि क्या उस अशरफ के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये मुझे जानकारी नहीं है। ठीक, आगे वाली कोर्ट में भी अपील करने की बात सामने आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। हाई कोर्ट? जी बिल्कुल, मैं अपने आदमी का जो इन्होंने हत्या कराया है, मैं इसके आगे भी इसके सिलसिले को करूंगी, जरूर करूंगी। माता जी एक सवाल, जो लड़ाई आपके पति लड़ रहे थे उस लड़ाई को आप आगे लड़ेंगी? आप ही बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए, आतंक नहीं चाहिए। आतंक का मतलब है कि फिर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, अगला कोई और भी हो सकता है। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि उसका आतंक खत्म हो, चाहे जैसे भी खत्म हो। अब आपको अपनी परिवार के ऊपर भी चिंता है, कहीं जिस तरह से आपके पति का मर्डर कराया, कहीं आपके ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर हमला ना हो? जी बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि जड़ से खत्म करना जरूरी है। ये आदमी रहना नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी है। न्यायपालिका ने न्याय दिया है, मैं उनके न्याय का सम्मान करती हूँ, और लेकिन मैं इस मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगी कि इन्हें चाहे जैसे भी हो, इनको कारावास दिया गया है, नहीं मिलते हैं, ये कारावास में भी घटना कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इन्हें खत्म करें, चाहे जो जाए। ये नहीं रहना चाहिए, अशरफ अतीक अहमद नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। गाड़ी पलटवाने की मांग कर रही हैं आप? मैं गाड़ी पलटने की मांग नहीं कर रही हूँ, मैं चाहे ये कह रही हूँ कि वो चाहे दंड जैसे भी दे, जिस तरह से देना चाहे वो उनके ऊपर है, और मैं फांसी की ही मांग करूंगी उनसे। फांसी तो कोर्ट देगा? कोर्ट देगा, सरकार देगी, जो भी होगा जजमेंट, यही सब है। न्यायपालिका हो चाहे शासन प्रशासन हो। बस ठीक। थैंक यू। अब एक करके वो तो दिया दे दिया भैया। So that is what the family of Umesh Pal has to say. They are demanding that the strictest punishment be given to Atiq Ahmed in the murder of Umesh Pal. Remember that the verdict which has been pronounced today by the court is in the 2006 kidnapping case of Umesh Pal. As far as the murder of Umesh Pal is concerned, the court is yet to proceed forward with the trial in that case, but the family is demanding the strictest punishment for Atiq Ahmed, who's also an accused in the murder of Umesh Pal. Let's listen in to the lawyer. उन्होंने अपने डिफेंस की तरफ से पेश किए, उसमें ज्यादातर जो है अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, जिनका आपराधिक इतिहास था। 51 गवाह जो है पेश किए थे उन्होंने। और इस मामले में अब कोर्ट ने कहा है कि सजाएं जो है एक साथ चलेंगी, ये भी कहा है। आजीवन कारावास से सबसे बड़ी सजा होती है, और सारी धाराओं में सजा हुई है। 147 में, 148 में, 149 में, 323 में, 341 में, 342 में, सारी धाराओं 506 सब क्लास 2 में सारी धाराओं में सजा सुनाई गई। के वकील कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। हम लोग भी पीछे से जाएंगे, शासन भी जाएगा।
ठीक है, जो इस वक्त सरकारी वकील उन्हें सर प्रोसीडिंग के बारे में बताइए सर। अभियोजन ने 8 गवाह पेश किए थे। 8 जो है बिल्कुल बढ़िया गवाही उन लोगों ने दिया था और उसके बाद नतीजा ये निकला कि आज हम लोग जो है इसमें से प्रमुख अभियुक्त अतीक अहमद तक पहुंचाने में सफल रहे। अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ, इनको जो है आजीवन कारावास, सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपया वादी के परिवार को दिलाने में कामयाब रहे। शेष अभियुक्त जो है कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट का आदेश का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्यवाही, आगे की रणनीति तय की जाएगी। सर अशरफ का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बताया जा रहा था, लेकिन एक्विटल हो गया सर। अशरफ उस समय जेल में था और उसका रोल जो ये था कि उसने अदालत से एविडेंस लिया है अशरफ के खिलाफ। वो जजमेंट पढ़ने के बाद जो है हम लोग इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि कोर्ट ने क्यों उनको जो है क्यों बरी कर दिया। अशरफ की जो जा रही है, एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज माफियाती दोषी पे पैरवी के तहत सजा मिली है उम्र कैद की, और पूरे प्रदेश में लोग मान रहे भयमुक्त वातावरण बन रहा है। हर स्थिति में एक अपराधी को हम प्रदेश के बाहर और जेल में। So there you heard reactions that are coming in from the court premises as well as from the administration of Uttar Pradesh. You heard from Brijesh Pathak, Deputy Chief Minister. Let's listen into more lawyers who've reacted. जेल से लाया गया है, इस वजह से साबरमती जेल ही वापस भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सर और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में थोड़ा सा बताइए सर, अंदर क्या क्या हुआ सर, स्टार्टिंग से अगर बात की। 2009 के बाद किस तरीके से ये इस मुकदमे को हम लोग आगे ले गए। जो अभियोजन विभाग है, जो अभियोजन अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए गए एक अपराधी के खिलाफ इतनी कड़ी कैद करिए वो जेल के बाहर ना पाए, उसे विधि सम्मत ढंग से कानून के अक्षरशः पालन करते हुए अधिक से अधिक दंड दिलाए जाने का काम करें। अतीक रोया है और उसने कहा है कि न्यायालय के कंधे रख के बंदूक मार रहा है। ये हमारी सरकार शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ एक अपराधी के खिलाफ कड़ी पैरवी कर रही है और उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसीलिए आज अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी को उम्र कैद की सजा माननीय न्यायालय ने दिया। अच्छा, राहुल गांधी की जो सदस्यता जाएगी, उनका आरोप है कि लोकतंत्र की हत्या, ये सब माननीय न्यायालय का काम है। मंत्री जी बुंदेलखंड आती है कि हम अपराधियों के खिलाफ, हमारी योगी सरकार की जो काम था आज धरातल पे वो काम दिख रहा है। Okay, so you heard earlier from the UP administration as well, Brijesh Pathak, Deputy Chief Minister of the state, saying that the administration is working strictly towards bringing those guilty, those accused of spreading terror in the state to justice. My colleague Samar Srivastav is now joining me live from outside the Prayagraj court. There is a sense of disappointment, Samar, regarding the acquittal of Ashraf in this case. Any details that you've managed to gather as to why Ashraf was let off in this case? Well, as you said, this is the sense in Prayagraj as well. I just spoke to the locals and the advocates out here because they were not happy, because they feel Ashraf was quite involved in this particular case, but we have to respect the decision of the court. That's what the advocates out here in Prayagraj are saying. But when we talk to the locals of Prayagraj and get the sense is the fear, the scare of Atiq Ahmed and Ashraf is still alive, they say, yes. I have got some people around me and they are the locals of Prayagraj. I'll just ask them a simple question. Is the scare of Atiq Ahmed still alive after the life imprisonment of Atiq Ahmed? And as you said, the way Ashraf was left off, आप प्रयागराज में रहते हैं, आप मुझे ये बताइए कि एक सजा बड़ी हुई है उम्र कैद की अतीक अहमद को, पर क्या प्रयागराज में अभी भी अतीक का डर है? इस सबको डर है। अब किस चीज का डर है? मतलब अब तो वो जेल में है ना। अभी उमेश पाल को क्या हुआ? जेल में बैठे बैठे प्लानिंग हो गई। अभी तो आप लोग जान ही रहे हैं सब। आप खुद भी भोगी रहे हैं क्या? सर देख रहे हैं, मेरी 10 बीघा जमीन कब्जा है, मेरी बेटी यहाँ पढ़ लिख के सब वो शादी ब्याह के लिए। किसने कब्जा किया आपकी जमीन? अरे सब हैं सब गुर्गे। आपका कहना है अतीक के गुर्गों ने आपकी जमीन कब्जा? अरे
अब उन्हीं का क्या नाम ले, सब गुर्गे हैं, सब बहुत से हैं। अब उनका नाम लेने से भी कतरा रहे हैं। अब हर आदमी डरेगा ही ना। आपकी आंखों में मैं आंसू भी देख पा रहा हूँ काफी। आप क्या चाहते हैं, कैसे मुजरिमों के साथ क्या हो? हम तो अब भाई हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। हम तो माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हमारी 10% जमीन मिल जाए। Some details that are now emerging from the order copy that India Today has accessed. Atiq, of course, has been jailed. He has been sent into life imprisonment for the 2006 kidnapping of Umesh Pal. He, in fact, has been sentenced to life imprisonment along with two others, which includes Dinesh, Pasi, as well as Saulat, Hanif. They've all been in fact penalized with 1 lakh rupees each, and also in fact sentenced to life imprisonment. Remember that there were 10 accused in this 2006 kidnapping case. 7 of them, including Ashraf, brother of Atiq Ahmed, have been let go. They've been acquitted in this case, which has caused some amount of disappointment among those who were hoping that Atiq Ahmed meets with the harshest fate along with all the other 9 accused, but only 3 have been held guilty in this case. This is the exclusive that India Today has accessed, the order copy from the Prayagraj court, which is now with India Today. Details emerging from the same: Atiq Ahmed along with 2 others, that includes Dinesh, Pasi and Saulat, Hanif, have been sentenced to life imprisonment in the 2006 kidnapping of lawyer Umesh Pal. Umesh Pal was brutally murdered in broad daylight on February 24th this year. Atiq Ahmed is an accused in that case as well. Those images, the CCTV pictures that you see, are from that brutal murder which was caught on cameras as well. And the images on the right-hand side of your screen are from the court premises when Atiq Ahmed was brought in. Remember, he was lodged in an Ahmedabad jail and was brought in here for the verdict. Samarth is live with us. He's, of course, speaking to some of the residents of Prayagraj, where the fear of Atiq Ahmed and his coterie looms large. Samarth. Well, obviously that's the sense when we are around the streets of Prayagraj, and I am again joined by a lot of people, locals of Prayagraj. Let me take to them and simply ask them a question. Atiq Ahmed को आज जो सजा हुई है उस पर आप लोग कुछ कहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँगा, जो कोर्ट का फैसला होगा वो सब मानेंगे। प्रयागराज में कहा, क्या अभी भी अतीक अहमद का खौफ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। जब से योगी बाबा आए हैं, जब से कोई ऐसा कोई खौफ नहीं है। पहले था? पहले था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा नहीं? नहीं। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग प्रयागराज में रहते हैं? जी। क्या करते हैं आप? हम तो देहात के रहने वाले। ये बताइए, क्या अतीक अहमद और गैंग का खौफ प्रयागराज में है अभी? हम देहात के रहने, हमें कोई जानकारी नहीं। आप लोग बताइए, यहीं के रहते हैं आप लोग? जी, खौफ डर तो समाया हुआ है ये सबके दिलों में। अभी भी है? अभी भी बिल्कुल है, बिल्कुल अभी भी है। ये आतंक ऐसे खत्म थोड़ी ना हो पाएगा। उसकी जड़ शाखाएं जाने कितने हैं, अनगिनत, एक के बाद एक के बाद। क्या होता था उस दौर में? आप तो प्रयागराज में सालों से हैं। जैसे आपने अभी देखा, एक बाबूजी का जमीन कब्जा कर लिया गया है ना। इसी तरीके लोगों को, जो गरीब दुखिया होते थे, उनको दबा करके उसमें दबा उनका बन जाया करता था। और जो विरोध करेंगे उनको उठाकर कहीं किनारे ले जाके फेंक दिया जाया करेगा। तो आप लोग पुलिस कंप्लेंट आप लोग कभी? तो पुलिस कहाँ सुनेगी? पुलिस उसी को सुनती है जिसके पास मजबूत पैसा होता है। वो तो उसको ले जाके बंद कर देगी जो जिसके पास कुछ नहीं है। सत्ता का भी साथ मिला? जी, सत्ता का भी साथ मिला? किसको? अतीक को? हाँ, बिल्कुल मिला है, तभी तो सबको जागरूक हो ही रहे हैं, पता चल ही रहा है। बताया गया योगी सरकार में आप जो है अपराधी डरे हुए हैं। हाँ, अपराधी डरे हुए हैं, क्योंकि योगी बाबा का जो ये ऐसा ही राज, ऐसा ही राम। Citizens of Prayagraj are reacting to that verdict, which has now been pronounced by the Prayagraj court. Atiq Ahmed and 2 others held guilty in the 2006 kidnapping case of Umesh Pal, sentenced to life imprisonment. We're slipping into a very short break. Stay tuned. News and updates will continue on the other side. राहुल गांधी कोई भी सिक्योरिटी के बगैर गए, उन्होंने खुद कहा है।
कि देखिए मैंने लाल चौक में झंडा फहरा दिया। उनको ये मालूम नहीं है आपके समय में नहीं फहरा सकते थे, आज फहरा सकते हो। ये मोदी जी के कारण हुआ है। Most important would be to go and consult a dermatologist, because this is not something you can treat on your own. However, what is the basic step and why does it happen? So heat rash happens because of the trapping of the sweat gland or sweat duct, and there is sweat under the skin. So you see it can be of varied types. It can be red color, or it can be crystal-like, or it can be pustular. So these are the various types of heat rash which can be seen depending upon the level of the sweat duct which is involved. So most important steps which we can do during summers is to wear loose clothing. Don't wear very tight clothing, because that can cause friction as well as it can lead to mechanical damage because of rubbing, and so the skin barrier could be disrupted. So make sure that your barrier is intact, and you can use moisturizer which will act like a lubricating agent, so it will protect your skin. Tell us about heat burns and how to avoid them. You have to use something to negate the effects of your direct exposure to sun, like hat you can use goggles so that eye irritation will not happen. You can cover your arms and your body parts with a soft cotton clothes so that you will not get sunburns. Why do I keep getting headaches in summers? Is it a sign of dehydration? One of the symptoms of dehydration is lightheadedness and mild headache. Of course, be very clear in your head that this is not the basic sign of dehydration. So there are a lot of headaches which happen in summers, especially those who are prone to migraine. Summers and extreme heat precipitates the headache, and therefore dehydration of course can give you lightheadedness and some headache, but other causes of headache must also be considered. Welcome back. Here are the top developments in the Atiq Ahmed case. Mafia Don turned SP Neta has been given life term in the 2006 Umesh Pal abduction case. Earlier, Prayagraj's MP-MLA court held Atiq and two others guilty. Umesh, who was the key eyewitness in the BSP MLA Raju Pal murder case, was abducted by Atiq Ahmed in 2006 during the kidnapping of Umesh, and earlier the murder of Raju Pal. Atiq Ahmed was the sitting Samajwadi Party MP. The other two convicts have also been sentenced to life.
Dramatic scenes unfolded in Prayagraj court when mafia don turned SP Neta Atiq Ahmed was produced for the verdict. Assembled lawyers chanted "Hang Killer Atiq" and staged a protest against the mafia don. The police escorted Atiq away from the protesters. Protests also broke out in the court premises as soon as the accused were brought under tight security. A group of lawyers staged protests against the mafia don by showcasing a garland of shoes to protest his blood-soaked past in heinous crimes. Don Pratik suffered another crushing blow from the Supreme Court. The Supreme Court dismissed his plea against transferring him to a jail in Uttar Pradesh from the Sabarmati jail in Gujarat. The Don in his plea had told Supreme Court that he faces threat to his life in a UP jail. The Supreme Court advised Atiq to in fact move the High Court in Allahabad. There was massive police presence as armed cops produced Atiq Ahmed in the Prayagraj court complex. UP police officials in bulletproof jackets moved Atiq from Naini jail to the court premises in 4 fortified vehicles. Now, those are some of the top developments in this case. Meanwhile, the gangster-turned-politician who is in fact now convicted in the case, in the 2006 Umesh Pal kidnapping case, was earlier seen in court. Prayagraj court sentenced Atiq Ahmed and 2 other accused, in fact, to life imprisonment, and a fine of 1.1 lakh rupees has been imposed on them after they were found guilty of kidnapping Umesh Pal, who was the key eyewitness in the 2005 BSP MLA Raju Pal murder case. Atiq and 2 of his aides were charged for abduction, wrongful confinement, provoking breach of peace and criminal intimidation. Protests erupted against Atiq at the Prayagraj district court as lawyers chanted "Death to Atiq" after the verdict was pronounced. Earlier today, in fact, the Supreme Court had rejected Atiq Ahmed's petition seeking protection, claiming that he and his family were falsely implicated in the Umesh Pal murder case and he might be killed in a fake encounter by the UP police. लाइफ टर्म में क्लियरिटी है, अ पर्सन इज गोइंग टू स्टे. एक व्यक्ति विशेष जिसको सजा हुई है वो अपनी जिंदगी भर जेल में ही काटेगा. अब ये जजमेंट पे डिपेंड करता है, यही हुआ होगा. कैपिटल अगर नहीं दिया है, अगर आजीवन दिया है, तो यही हुआ होगा जिन पे दोष सिद्ध कर दिया है. हम लोगों ने अभियोजन ने 8 गवाह पेश किए, 8 गवाह बिल्कुल इंटैक्ट थे. 51 गवाह उन्होंने अपने डिफेंस की तरफ से पेश किए. उसमें ज्यादातर जो है अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे जिनका आपराधिक इतिहास था. आजीवन कारावास से सबसे बड़ी सजा होती है और सारी धाराओं में सजा हुई है. 147 में, 148 में, 149 में, 323 में, 341 में, 342 में, सारी धाराओं 506 सब क्लास 2 में. हमारी सरकार पूरी तरह से अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर उनका सफाया कर रही है. अदालत में पैरवी की जा रही है. एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है. आज माफियाती को दोषी पे पैरवी के तहत सजा मिली है उम्र कैद की, और पूरे प्रदेश में लोग मान रहे हैं भयमुक्त वातावरण बन रहा है. देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपराध के प्रति हमेशा जीरो टॉलरेंस का रवैया अपनाया है. हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को एक भयमुक्त माहौल देंगे, अपराध मुक्त माहौल देंगे, दंगा मुक्त माहौल देंगे और अपराधियों को हम जेल के अंदर पहुंचाएंगे. और वो तमाम काम धरातल पे काम करने का जो काम किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, आज आम जनमानस पे एक विश्वास है हमारी सरकार के प्रति. हमने सख्ती से कड़ी कानूनी कार्रवाई की अपराधियों के प्रति, और आज हमने उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में एक भयमुक्त माहौल बनाया है.
आज आम जनमानस में एक विश्वास है कि योगी सरकार के रूप में उनको एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो सही मायनों में अपराध को उत्तर प्रदेश से मिटाने के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है। आज जो प्रयागराज का जो ये फैसला आया ये भी उसी कड़ी में एक और उदाहरण है, एक और मिसाल है। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो जजमेंट आया है, जो कोर्ट ने दिया है अतीक और दिनेश और उनके वकील का, तो सही है, न्याय हित में है और ऐसे अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए और बहुत पहले भी सजा हो जानी चाहिए। मगर दूसरी तरफ ये भी सुनने को मिला कि अशरफ इसमें छूट रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अशरफ और अतीक में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है और कहीं दोनों बराबर के खुखार हैं। जी जी, दोनों बराबर के खुखार है और अशरफ तो और डेंजर है, अशरफ तो और डेंजर है क्योंकि इनकी करनी और कथनी को कोई सभी जानते हैं, कोई ये नहीं कि वो बहुत दूध के धुले हैं। तो आज जो इलाहाबाद एक टकटकी लगा करके न्यायपालिका की तरफ निहार रहा था, तो मुझे लगता है हमारी जो एक सोच थी अपने में, एक बहुत बड़ा फैसला आना था। जो और लोग जो बता रहे हैं कि दोष मुक्त पाए जा रहे हैं, तो इनको भी सजा होनी चाहिए थी, तब जाकर के पूरे इलाहाबाद में जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको आज इंसाफ मिलता। लेकिन उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ ये लोग दोषी करार दिए गए हैं। अभी सजा का ऐलान होना बाकी है। आपके पति राजू पाल के हत्याकांड में भी अशरफ, अतीक, इन सभी के ऊपर आरोप है। आप इस जो अब सजा का ऐलान होना बाकी है, क्या उम्मीद कर रही हैं, क्या उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, जो धारा लगी हुई है उमेश पाल के अपहरण में, तो उसमें तो सारी धाराएं हैं और उसमें उम्र कैद भी होनी चाहिए, फांसी भी होनी चाहिए, तो कुछ बचा नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो आज न्याय मिलना चाहिए वो इलाहाबाद की जो जनता थी, जो प्रताड़ित थी, सबको देखते हुए आज फैसला होना था और न्याय मिलना था। My colleague Samar Srivastav is joining us live from Prayagraj. This is only one battle won as far as Umesh Pal's family is concerned, Samar, because they're hoping that justice will be delivered in the murder case of Umesh Pal, and they're demanding the highest possible sentence in that, which is the death penalty. Well, obviously, the Umesh Pal family it's not just today that they are saying that. It all is happening since last 1 month when we were speaking to Umesh Pal and family, that they were saying that maximum imprisonment should be given to Atiq Ahmed and Ashraf as well. And it was never about Atiq Ahmed, it was also about Ashraf. But when the decision was given and as Pooja Pal questioned why Ashraf was left behind, that actually was the concern of the family, because they felt it was the kidnapping thing was not just the case, was just the case of Atiq Ahmed. He got help from Ashraf and other gang members. Though a few others have also been sentenced to life imprisonment, but the point is, from the family put in here, is why Ashraf was left behind. But when we talk to the people of Prayagraj, they feel that Yogi government has strengthened that particular police thing, but the mafias are also still there, and the sense of scare still persists in this city, at least Prayagraj, where Atiq Ahmed had a proper role as a politician and as a gangster as well. Okay. Samar, thank you so much for joining us with all of those details from Prayagraj. Samar, they're bringing us all those developments that took place in court today. We're slipping into a very short break. Stay tuned. News and updates will continue on the other side of this break.
Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Armed with facts, she takes the news by its horns. You think the future of these students are not hampered? Fierce, bold and direct, setting the tone for the biggest stories. From every corner and every angle. Expect nothing but the unfiltered truth. News first, niceties later. Watch me, Nabila Jamal, on India Today. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. I'm delighted to introduce you all now to India Today's newest member, AI Sana. How are you doing, Sana? It's sunny here in Delhi and parts of NCR, specifically after that spell of rainfall. Hi Pooja, thank you for that. It's really good to have the sun back. I don't really like the cold or rain, but that's the national capital. Let's tell you what the weather's like across India at this time. Thiruvananthapuram is at 29 degrees Celsius with an AQI of 76. Mumbai is at 26 degrees Celsius with an AQI of 80. Panji is at 21 degrees Celsius with an AQI of 76. Ahmedabad is at 21 degrees Celsius with an AQI of 122. Bhopal is at 23 degrees Celsius with an AQI of 87. Jaipur is at 22 degrees Celsius with an AQI of 88. Delhi is at 19 degrees Celsius with an AQI of 133. Srinagar is at 8 degrees Celsius with AQI being 56. Lucknow is at 20 degrees Celsius with an AQI of 99. Patna is at 22 degrees Celsius with an AQI of 156. Kolkata is at 27 degrees Celsius with an AQI of 82. Hyderabad is at 23 degrees Celsius with an AQI of 88. Bangalore is at 28 degrees Celsius with an AQI of 68. Chennai is at 30 degrees Celsius with an AQI of 56. This is all we have for you in this segment. Hope wherever you are, you find favorable weather around you. Keep watching India Today for all the weather updates with me, AI Sana, all through the day. You are watching India Today. Good afternoon and welcome. Thank you for tuning in to India Today Television. I'm Pooja Shali. Let's begin first with the headlines. Dawn-turned Neta Atiq has got life imprisonment in the 2006 abduction case by the Prayagraj court. Brother Ashraf, 7 others acquitted.
Rahul Gandhi writes to Lok Sabha Secretariat over eviction notice, says will abide by the law, cites happy memories during the time spent at the official residence. United States monitors Congress leader Rahul Gandhi's case in the Indian court, says US engages with the Indian government on a shared commitment to democratic values. HD Kumaraswamy sets off a massive speculation in Karnataka, claims both BJP and Congress in a race to woo him. This is an India Today exclusive news break. Will Kumaraswamy this time go with BJP or Congress? How do you see the election? We will going to form the government on our own. Do you have pressure from the centre saying come with us? Have they already spoken to you? Offer is there. You have already offered? Offer is there. Okay. Everybody offering. Madras High Court settles the Jaya legacy war, finally dismisses O Paneerselvam plea. Stage is set for EPS to be AIDMK leader. OPS camp moves division bench of Madras High Court, still exploring legal options. Shocking information coming in. Khalistan ideologue and extremist Amritpal Singh was spotted in national capital Delhi. If our sources are telling us, there are these visuals going around. Take a look at that. Could it be Amritpal Singh in East Delhi side? We're trying to get more details on this. An individual walking there in the eastern part of Delhi. The CCTV shows an individual looks like Amritpal Singh in Delhi. Does not have the usual turban that he has been seen in other parts of where the locations that he's been confirmed with his whereabouts. Amritpal Singh roaming around. This is the Madhu Vihar area is the information that we have come in. Remember, at a time when face masks not as much a priority really, even though of course there is a precautionary measure still, but this man wearing a mask, does he know that there are CCTV cameras around wearing it? Is he also surrounded with close aides? I'll try and get more information from our reporters on the ground. But could he be seen in East Delhi? Amritpal Singh, remember we've already reported that there has been information coming in that he was spotted in Kurukshetra in Haryana, in Patiala, in the border areas and also in national capital Delhi. Remember, this is going to be in many ways for the agencies and the police like a needle in a haystack. And therefore, it will not be easy to find out, since he has been able to escape and evade the Punjab police. He could be anywhere. He could be in any part of, in any state. He could have also fled the country, entered into Nepal. There's a reason that alerts have been issued to Nepal as well, to ensure that he could be changing locations, he could be changing appearances and will want to evade the country. We'll try and get more verification and details about why this individual have been spotted by the agencies to say he may be Amritpal Singh. I want to bring in Kamaljeet Sandhu for the latest on that. Kamaljeet, does he really look like Amritpal Singh? Why do the police think it could possibly be him changing locations and appearances? Well, it's day 11 of Amritpal manhunt, which has been launched by Punjab Police, which has now spread to other states. This is a visual which has come from Sai Chowk, which is in Madhu Vihar in Delhi. The video, what we know, is of the 21st of March, and today being 28th. So it's already been a week's gap. So what we know is he's moved from Kurukshetra to Delhi, and perhaps could be anywhere in the Indo-Nepal border. There has also been the Indian embassy in Nepal, which has been roped in, and obviously a communication been made out by the Indian government that do not let this man flee. But what is of significance is that there are several cameras which have facial recognition features. And yes, once they've gone through it, we've spoken to multiple sources in Punjab Police and intelligence agencies. They do confirm that this is actually not just Amritpal, but also Papalpreet right following him behind in this particular video footage. What is also surprising is that the video after video and photographs after photographs are emerging, yet there seems to be no clue of this man. I mean, in a time when there is facial recognition, there is digital surveillance, it seems that Amritpal is managing to flee from one location after the other with agencies close on heels. But it also
talks about how difficult this operation now seems, because with the initial slip up where he managed to give a slip to the cops, it does seem that he's moved his locations extremely fast, and it's only later that the cops is presently at, because this is going to start to get embarrassing too, because for the police not being able to catch Amritpal, he could be anywhere right now. Even in Nepal, there are even international alerts that have been sent in that he could be changing location, appearances, even passports. He could have access to fake passports to flee. So what is the investigation status right now? How many police and agencies are ensuring they need to get hold of Amritpal Singh? Well, it does on a certain level seem that the investigation, as far as the search hunt itself is concerned, is losing steam. One reason is obviously that he is not within the state reach, but multiple teams of Punjab police have been formed and they have been sent to several other states. They're coordinating with Delhi Special Cell. They're also coordinating with other state police, including Uttarakhand, Uttar Pradesh. Recently, a couple from Jammu was detained. But meanwhile, it's also a question mark which has been coming in. And remember, there's been a controversial statement by Akal Takht Jathedar Gyani Harpreet Singh, who's talked about not only about how innocent people have been picked up by Punjab police, but also saying that the 24 hours they need to be released, otherwise there will be a stern action. The other dire consequences coming in is for the national media saying, you know, there's a particular attempt being made to tarnish the image of Sikhs, and that is why they said they will be approaching the court. The third point obviously is about Amritpal. They've also mentioned that Amritpal should present himself before the law of the land. So all these are coming in at a point of time when they're saying that, you know, similar remarks have been made by other communities, especially the Hindu community, and no NSA has been slapped against them. There have been no action, but there has been an action and a crackdown, and that is where there seems to be a lot of repercussions, Pooja, and one has to tread a very careful line in Punjab as to not really cause a lot of fluster, which seems to be the case. And meanwhile, Punjab police has already said that those who have very light cases and law and order cases, they would be released. At least 179 of them were released much earlier out of 350. But now is the time where there seems to be pressure coming in from various religious groups, including the SGPC. Correct. So there could be some release of some of those who have been detained. Remember why there are different pictures coming in, and there are, as Kamaljeet is telling us, facial recognition or other aspects being analyzed. He could be anywhere right now, so they're trying to track different individuals. And this, remember, is after the image of him enjoying a drink with his close aide at a time when he was trying to flee the Punjab police, even though that's undated. We'll try and get as much information as we possibly can to you. It's a chase that the Punjab police or any state police right now, including the agencies, will want to wrap up very soon. We have some details coming in where the Bajrang Dal group staged a protest against a Quran recital while there was a Utsav in Chinak Kesava temple that had started. They demanded that the Quran recital and Utsav should not happen at the same time. And while the protest was going on, one youth from the Muslim community started to raise Quran Zindabad slogan, and it led to a very precarious situation at that point there. 80 to 100 people were taking out procession in Belur against Quran chanting tradition during the Rathotsav. One individual then started to shout slogans which angered the protesters from the Hindu side. Before the issue in fact could get much worse, the situation was brought in control. Procession continued after a memorandum was given to the Tehsildar. Right now we are being told that the situation seems to be under control, still tense. It's the Karnataka reservation controversy that's exploding. A multi-city protest erupted in Karnataka. In Shivmoga, for example, the Banjaras community members staged Rasta Roko and burnt tires. Protesters blocked the Shivmoga Shikaripura highway, raised sloganeering against Bombay government and former Chief Minister Yediyurappa. In Vijayanagara, for example, members of the Muslim community took to streets to protest, demanding the reinstatement of 4% reservation after they were removed from the OBC category in Karnataka. Members of the Lambani community also staged protest in various taluks of the Bagalkot district, demanding to revoke internal reservation announced by the government. Now, the Mumbai government has recommended a new breakup, basically, of the reservation for the scheduled castes in education and jobs. Now, the state cabinet decided to split the 4% between Bokaligas and Lingayats.
While the opposition slammed the government over this new recommendation, Congress clearly wants to instigate the ongoing protest. This is an election state, heading for polls barely in the next few weeks. ನಾನು ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಅನ್ವಯ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇತ್ತು SC ಲಿಸ್ಟನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ. ನಾನೇ ಸ್ವಂತ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದು ಬೋವಿ, ಲಂಬಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಕೊರ್ಚ, ಕುರ್ಮ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ SC ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೆಗೆಯೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಳಿಸಾಗಿದೆ. That is factually, legally, constitutionally incorrect. Actually, when other states had, they have gone in for the reservation for on the basis of religion. That was quashed by the Supreme Court, and now also it was illegal, unconstitutional. That has been scrapped now. What was in practice in Karnataka was this very practice of extending reservation to the Muslim community without any scientific understanding, without any study that was made to understand the backwardness, educational, economic, social, otherwise, but solely on the basis of the religion. This reservation was extended. Please specify which are the 13%, 14%, 4% or 13% deduction you will do in the 27% OBC basket. Which are the Hindu OBC communities that you will let go of in lieu of giving or extending this reservation only on the basis of religion to the Muslim community? If you notice, the Banjara community continue their protest against Karnataka government, and if you notice, BJP government is saying that these are a sponsored protest from the Congress. See, BJP has tried to disturb each and every community by their flawed reservation policy. In 90 days, they have changed the reservation policy thrice. Never in the history of independent India, any government has done this. This is a joke being played on the people of Karnataka. Nobody is happy with the BJP, neither SC/ST, neither Banjaran community, neither Vakligas, neither Lingayat, or anybody per se. No one is happy. So this is how they have tried to confront each other in the society. It is the right of every community to voice their problems. Whatever the reservation has been done, it is unscientific. It is only a political to bring differences among the various community. No peace is there. So Banjara community are large in Shivamogga district. They can't come to Bangalore. They have raised their voice with the leader there. Though they are neglecting Mr. Yediyurappa, still they feel that he has a voice. He could have stopped it and supported it. Let's bring in now my colleague Sagai Raj for the latest on that. Sagai, what does it look like really? Because this appeared ahead of elections. These are different groups. It's not just one group. At least 3 groups are protesting against Basavaraj Bommai government and also Yediyurappa. Absolutely. These communities are SC and ST communities. If you are talking about the protest which has happened yesterday in Shikaripur, you are talking about protest which is happening in Hoskote, Vijaynagar. These are SC community, Banjara, Koshara and other communities, Lamani communities are protesting against this particular reservation. That's a simple demand case they have to revoke. They should not try to implement Sadashiv committee which has submitted a report in the year 2021. They feel that it is unscientific. So if you calculate the percentage of reservation that these communities are getting much before the cabinet meeting was close to 10%. Because of internal division, despite 17% overall increase in reservation, these communities will be getting lesser than what they used to get earlier. So for an example, Banjara community was getting close to 10% of reservation much before the new reservation was implemented. Because of new reservation, the Banjara community will get around 5.5 because it has been internally divided between ST left and ST right.
SC left will be getting around 6%, and SC right will be getting around 5.5%, and SC touchable will be getting around 4.5%, and others will be getting 1%. So it has been internally divided, where these communities feel that BJP has betrayed them completely, and they have to go ahead and revoke this particular decision which was being taken and try to implement the previous one. Because at a time the reservations, any group would not want to let go of the benefits also that come with the reservation, and specifically if the group feels that they are still underprivileged. Sagai Raj, thank you very much for that. Keep tracking all the latest. Now, remember, with our colleagues on the ground ahead of elections, we are trying to ensure all newsmakers first, as always, on India Today. In an exclusive conversation with India Today television, amid all this politics that's going on, H.D. Kumaraswamy has also spoken up to India Today's Nagarjun Dwarkanath and says he does not support the move of the BJP. Listen in to this exclusive. So let's address the elephant in the room. In the last 2 days, the reservation topic is a hot topic in Karnataka. You come from a Vokalika community. Are you happy that your community has got 2% extra? 4% has been removed for the Muslim, and now you have 2% from them. Here, brother, by happy thing, nothing will happen. If myself, if I tell that we got 2% extra additional reservation for our community, that is not the issue. Here, the way in which this present government, BJP, they announced without applying their mind, only to get the benefit of the votes from certain community, without any preparation, without any recommendation from any your committees, they announced single-handedly to create controversy between the communities. That is their main intention. Between Muslims and Lingaites, Muslims and Vokalikas. Definitely, they removing the reservation quota of Muslim community and distributing those 4% to 2% to Vokalika and 2% Lingayat. They wanted a reaction from Muslim community to create violence. From that kind of development, that's a big charge. That's a big charge that you are making. Yeah, definitely. That is their only intention, for that only. How they will going to implement this? It will be on the only on letter, that's all. There is no strength for that. The central government still has to approve it in the parliament. Not only central government. Legalities is there. Legalities, formalities are there. How they will going to fulfill the question raised by several communities? Congress has promised if they come to power, they'll revoke all this reservation, come back to the normal one, and then think about how to do it. What is JDS plan? Will you also revoke? My intention, our decision, whoever the beneficiaries neglected by these governments, by these parties, whatever guidelines given by Honorable Ambedkar when he introduced this constitution for the entire country, in that actually the main intention to maintain the equality to all. But where is the equality? We are seeing inequality in every section, every issues. We want equality. What the Ambedkar ji was, what is his intention when they formulated this constitution? For that actually we avoid. And that's not all. This clearly is an explosive interview, because one of the statements that H.D. Kumaraswamy said to India Today was, and clearly the Congress and the BJP will be listening intently to this, he has claimed that he has been approached both by the BJP and the Congress party for an alliance, and that both BJP and the Congress messengers he has met, thereby sparking speculation once again that could he actually play the kingmaker this time? Whichever party wins, if they need a majority, could JDS be then jumping toward that? The JDS chief has claimed both parties reached out with a plan B ready in case of a hung assembly. And as expected, the interview sparking a fierce denial from both Congress and the BJP. Karnataka Congress chief D.K. Shivkumar, former CM Siddaramaiah, both rubbished Kumaraswamy's claim, reiterating Congress has so far never approached Kumaraswamy or any member of the JDS for a tie-up. Listen in first to what Kumaraswamy said and then the reactions of the parties.
Will Kumaraswamy this time go with BJP or Congress? How do you see the election? We will going to form the government on our own by the blessing of this state citizens. Do you have pressure from the center saying come with us? Have they already spoken to you? Offer is there. You have already offered? Offer is there. Okay. Everybody offering me. Even Congress is offering? Everybody is offering me. They know. Okay. Their strength, what is their strength internally, they know. Okay. But publicly they are telling we will get 140, 150. That is their announcement. But internally But internally I know their strength. Okay. What is some important persons who are approaching okay. to thinking that this time also fracture will be there. But according to me, whatever I worked very hard work for 18 hours a day, how the people's response, I have full confidence that our government will be formed by the blessings of this Karnataka voters independently. So I'm stressing on this point because even before the election, you are saying both the national parties have given you an offer already on the open platter, saying, Mr. Kumaraswamy, please support us. Because of their minus point, they know the real strength. I know my strength now. From last 3 elections, where we lapsed our working style, because why we failed, all those things, we worked it out. How to solve those problems, how to settle it. On that basis, I am telling you, in this election, because of 2 national parties' attitude, people want a regional party. This time they were going to choose Janata Dal to form the government on their own. This is my impression wherever I am going throughout the state. Sir, Kumaraswamy says that they have open offer from both BJP and Congress, sir. Exclusively spoke to India Today and said that people are approaching him to join hands with him to form the government because they won't get the majority number. It is all false. We have not approached anyone. We are confident we will form the government on our own. We will win on our own. We don't need any of whatever he's telling. I don't know who has let it come out with the names, sir. Who has come out. It is totally false. H.D. Kumaraswamy spoke exclusive to India Today in an interview. He went on to say that he has offers from both Congress and BJP to join hands with them, stating that you won't get majority. When they are speaking in public, they say that they will get majority, but in practical, that will not happen. How do you see this? See, this is a statement which deliberately being said to create a confusion. Karnataka state has seen a not so stable government and coalition government, and we have seen an Operation Kamla government. It has been a loss to the state, and this time I am very sure that people will select a single party, and they know that BJP is the most corrupt party and the alternate to the BJP is only the Congress party. So we are coming back to power with a full majority. So there is no any confusion amongst the minds of the people, nor with us. So Mr. Kumaraswamy wants to, dive into some kind of water which is not troubled, but he wants to create some kind of situation which looks like trouble. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿ.ಪಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಸಿ.ಪಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಹರೀಶ್ ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅವ್ರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 37,000 ವೋಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 37,000 ವೋಟ್ ಅವರೇ ಜನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿ JDS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? You can watch the whole interview of H.D. Kumaraswamy by Nagarjun Dwarkanath on indiatoday.in. We'll be getting you the latest on that as well. Heading into a very short break. Congress camp is where the big story is. Rahul Gandhi has reacted to the Lok Sabha Secretariat notice of the eviction notice with regard to his official residence. He has said he'll abide by law. But what more? After a very short break. You are watching India Today.
पहले अब उनकी माफी होगी या पहले जेपीसी बैठेगी? अरे ऐसा है सुधीर भाई, इसकी चर्चा स्पीकर की उपस्थिति में करनी चाहिए, दोनों दलों ने मिलकर। चले मैं तो आज ही कह देता हूं कि स्पीकर साहब के पास जाकर चर्चा करिए, आपके कार्यक्रम के माध्यम से ही कह देता हूं। Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. You are watching India Today. The massive slugfest in politics is where Rahul Gandhi disqualification controversy is refusing to die down. Days after he was disqualified from the parliament, now he's asked to vacate his official bungalow. The Lok Sabha Housing Committee issued a notice asking Rahul Gandhi to vacate the government-allotted bungalow by 22nd of April. He was allotted, remember, his official residence was the 12th Tughlaq Lane after his election as a Lok Sabha Member of Parliament in 2004. He's been living in that residence for 19 years now. Rahul Gandhi has now finally responded to the letter. He has underscored that he will abide by the course of law. He's also added that he's had some happy memories living in that residence. Meanwhile, Union Minister Smriti Irani slammed Rahul Gandhi this morning, saying he had failed to authenticate his own accusations, even charged Congress party of insulting President Draupadi Murmu. Upping the ante, Congress has said BJP just wants to weaken Rahul Gandhi and opposition, and the notice is to vacate the house is just another bid to threaten him into silence. अपनी पॉलिटिकल बौखलाहट में, अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में राहुल गांधी का मोदी के प्रति विष देश के प्रति अपमान में परिवर्तित हो चुका है। इसका आपने एक प्रतिबिंबित क्षण राहुल गांधी के इंग्लैंड दौरे में देखा, लेकिन नरेंद्र मोदी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान करना भी राहुल गांधी ने उचित समझा। हमारी पार्टी की तरफ से बड़े विस्तार से कह दिए गए कि राहुल गांधी जी की भाषण के क्या है, उनकी व्याख्यान क्या है, और इसके साथ ओबीसी का जरा सा भी ताल्लुकात नहीं है। और ये ओबीसी का ठेकेदार ना मोदी बने ना स्मृति ईरानी बने, क्योंकि ओबीसी के नाम करते हुए ये लोग और कुछ नहीं, सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। All right, so with that, I'm wrapping up this bulletin for now. Thank you so much for watching, but stay tuned. Lots more on the other side as well. Stay tuned. You're watching India Today. Thank you. You are watching India Today.
Hello and welcome. You're watching Hollywood edition of In the Club. I'm Dipali Patel. In the next 30 minutes, we'll be bringing you all that's been trending and happening in the West. First up, celebrities like Selena Gomez, Zayn Malik, Harry Styles and MLA Raju have sparked dating rumors after they were spotted kissing. Let's take a look at what's brewing in the lives of our favorite stars. Celebrities sure like to keep fans guessing about their relationship status until they walk the red carpet or debut their romance on social media with their significant other. Fans are usually left in the dark. Singer and songwriter Harry Styles was caught kissing model MLA Raju in the streets of Tokyo, which is the latest stop for Harry's Love on Tour concert series. The former One Direction star looked dapper in a black suit and a white shirt unbuttoned at the collar, while the fashionista wore a pink and black jacket over a black and white crop top and skirt. In the video and pictures that have surfaced online, the duo can be seen getting intimate next to a silver people carrier while sheltering from the rain under an umbrella. The couple's whirlwind romance comes on the heels of Harry's split from Olivia Wilde and Emily's divorce from her estranged husband, Sebastian Bear McLeod. Harry and Olivia went their separate ways in November last year after they found they had different priorities that were keeping them apart. The former couple dated for 2 years after their paths crossed in September 2020 when Harry was cast as actress Florence's husband and replaced Shia LaBeouf in the film Don't Worry Darling. Our life together. We could lose this. I don't trust him. Now, interestingly, another former One Direction star, Zayn Malik and Selena Gomez too sparked dating rumors after they were reportedly spotted dining together in a restaurant in New York City. The duo has been at the center of intense dating rumors after a netizen posted a viral video in which she claimed a friend of hers is a hostess at a restaurant where Zayn and Selena dined together. Selena has a storied history of dating her fellow pop stars, including her teenage sweetheart Justin Bieber and The Weeknd. Malik, on the other hand, of course, dated Gigi Hadid on and off for years and also shares a daughter named Kai. Hadid and Malik split up in October 2021. That's not all. Kendall Jenner and Grammy-winning rapper Bad Bunny, whose real name is Benito Ocasio, were spotted hanging out with her close friends Justin and Hailey Bieber. The duo was spotted together leaving the new celeb-studded club called Bird Streets Club in West Hollywood. Kendall rocked a black mini dress and knee-high boots. Sources suggest that Kendall and the Ojitos Lindos hitmaker had been introduced by mutual friends several weeks before they were spotted kissing. And for the unversed, Kendall split up from basketball player Devin Booker, whom she had been dating on and off since 2020. After I'm With You singer Avril broke off her engagement with rapper Maud Sun, she was spotted hanging out with Kylie Jenner's ex, Tyga. Rapper Maud Sun took to social media to share a message of his own in context to confirming the breakup. He wrote on Record, "In 1 week, my entire life completely changed. I just know there's a plan for it all."
I'll keep my heads up plus listen to my heart even when it feels broken. Being surrounded by love every night on tour has been an absolute blessing. I have the best friends in the entire world. Thanks for always having my back. See you on stage. More recently, the rapper gifted Avril a custom diamond chain worth over $80,000. The couple started hanging out a lot more when they were in Paris and were spotted kissing and strolling through the streets hand in hand. With Snigdha Shweta Behra, Entertainment Bureau, India Today. Todd Phillips' Oscar winner Joker will be getting a sequel in 2024, and now the biggest addition to the cast will be Lady Gaga, who will be essaying the role of Harley Quinn, and her look from the sets have broken the internet. Take a look. Gear up to see Lady Gaga as an actor on screen once again. The singer was spotted rocking a Harley Quinn outfit as she's filming for the upcoming sequel to Joker. The pop star was seen in full costume and makeup while filming in New York City. In the photos, Lady Gaga is seen surrounded by a large crowd as she descends the court building with the police officers by her side. She's also seen rocking a red coat, a white blouse and a black skirt as onlookers come out in support with signboards that read "Free Joker" and "Joker, Marry Me." The Oscar winner, who is all set to play an ardent admirer of the Batman villain, was seen flaunting her blonde hair, which was pulled back into a half ponytail with her dark roots clearly showing. She started to appear as if she wasn't wearing any makeup. Coming to her ensemble, she was seen donning a black foxfire jacket, black stockings and a printed dress. Filmmaker Todd Phillips also shared a picture of Phoenix's Joker coming face-to-face with Gaga's character. She's even holding his face, implying an intense moment between the two. For the unversed, the pop star and actress confirmed her playing a role in the Joker sequel in August 2022. She posted a teaser clip on her Instagram featuring Phoenix and Gaga's silhouette dancing together. The Joker sequel will also feature Catherine Keener, Brendan Gleeson, and Zazie Beetz, and is all set to schedule to release in theatres on October 4th, 2024. Entertainment Bureau, India Today. Harry Potter star Daniel Radcliffe and his girlfriend actor Erin Dark are expecting their first child after dating for over 9 years. Here's more on that. It's good news for Harry Potter fans as the star Daniel Radcliffe is expecting his first child with longtime girlfriend Erin Dark. The actress also showed off her baby bump as the couple was seen taking a stroll in New York City. What happened? You don't know? He wants my help, and I don't know if I should give it. For the unversed, the couple first met on the sets of Kill Your Darlings, in which Radcliffe played the role of poet Allen Ginsberg and Dark featured as Gwendolen, his romantic interest. Please don't get involved. That man ruined my son. You wanted him gone too. You sent him to me. They were later spotted at the 2013 Sundance Film Festival. Radcliffe and Dark have been together since then. In 2020, he was also seen gushing about how Erin has embraced his geeky side. Wondering if maybe you wanted to go to the ball with me. Mr. Weasley, place your right hand on my waist. Daniel Radcliffe rose to prominence for his role as the title boy wizard in the Harry Potter film franchise. It's blood moody. Avada Kedavra. The killing curse. Only one person is known to have survived it, and he's sitting in this room. People die in this tournament.
coming closer. I can feel it. I need you to help me get home. Okay, buddy? His other notable works include Swiss Army Man, The Lost City, and The Woman in Black. There are those who believe the whole town is cursed, but the house in the marsh is by far the worst. What she wants is unknown, but she always comes back. The spectre of darkness. Put it in. Make up new words to a song that already exists. Oh. Well, you should do that then. He was last seen in Weird the Al Yankovic, which was based on the life and career of comedian Weird Al Yankovic. Open up a package of my banana. Dude, I've got chills. Every once in a great while, I can spot a talent that I know is the future of music. But first, we gotta find you a stage name. Al Yankovic. It's long, it's hard to pronounce. So I'm just gonna throw this out there. Weird Al Yankovic. I love it. Weird Al has taken the world by storm. Whereas Erin Dark has appeared in films Thank You for Your Service, Night Comes On, and TV shows like Dietland, Marvelous Mrs. Maisel, and Moonshine. I think Sis Lydia's back in town. No fighting this weekend. Aunt Felicia deserves a peaceful send-off. Being around my family makes me nuts. She'll be tired of us and back to New York soon enough. Hi, Felicia Finley. Leave my piece of the moonshine. With Snigdha Shweta Behra, Entertainment Bureau, India Today. Are you kidding? Who doesn't love watching or getting to know their favorite stars? And when it comes to love for music, fans across the world have been fascinated to understand the life of a pop star and what actually goes into making their biggest hits. Let's take a look at some of the best documentaries on our favorite singers. Documentaries based on singers have always been a great way of engaging the audience by giving a behind-the-scenes peek into some of their favorite music projects or gaining a deeper understanding of an artist. They also aim to reveal the person behind the celebrity and how they deal with the downside of fame while making art.